Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, a very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well. Hope you're staying safe and you're staying healthy. Uh, Halaki, I am waiting for other guests, but my special guest is definitely here in the backstage. Maine abhi dekha. I didn't want to keep anyone waiting. I know you all really want this particular session. You've been asking for this one, and I'm really honored to have him on this special day, सुशांत डे, जो कि हम पिछले 17 घंटों से 18 नहीं 18 आवर्स से कर रहे हैं. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट लाइफ. 18 hours and another couple of hours left, and we are definitely very happy to be having this session. Yes, we are all waiting, and I will not make you wait anymore. As and when baki guests join hote jayenge, because this is a continuous live, I really want to make sure we don't even waste 1 second, because I personally have lot to thank Samir himself. I have lot to tell him. I have a lot of gratitude that I have to share. At the same time, sirf gratitude, sirf thanks nahi. Also, to hear, what all has happened in the last almost 18, 19 months, personally with him as well. क्योंकि ये session, we're not going to focus more about uh, him as the individual NCB director. This is Samir, our फैमिली मेंबर, जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है पिछले 19 महीनों में, जिन्होंने बहुत कुछ किया है हमारी कंट्री के लिए, एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम. सो एक्चुअली लेट्स जस्ट हैव वन मोर स्पेशल गेस्ट, जिनको शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, द लेडी सिंगम, हु हैज every single day raised her voice against almost the similar things. जहां समीर ड्रग माफिया और उन चीजों के अगेंस्ट लड़ते हैं, वहीं पर ये हर गलत चीज के लिए आवाज उठाती है. सो आई एम गोना फर्स्ट ऑफ ऑल टेक हर. नमस्कार एंड वेलकम प्रीति जी. जय हिंद. जय हिंद एंड हैप्पी सुशांत डे टू यू. आपको भी सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. ऐसे बोलना चाहिए हमें. बिल्कुल बिल्कुल. और हम ये बात तो करेंगे. आई डोंट वांट हिम टू वेट एनी मोर, सो आई एम गोना टेक द रियल सिंगम एंड द रियल हीरो, जिसको हमने बहुत बहुत चीजों से जाते हुए देखा है in the last 18 months. I think we witnessed his journey more than anybody else, and hats off to him. He stands strong, he stands tall, and he will always be our real hero. So without wasting any more time, welcome Samir, and good evening, good morning, good evening आपकी तो. जय हिंद वरुण. जय जय हिंद. प्रीति जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ समीर जी, आप कैसे हैं? ऑल गुड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो आपको पता नहीं किस किस चीज के लिए हम करें समीर. कहाँ से शुरू करें? आई थिंक दैट वुड बी द थिंग. इतना कुछ हमने एक साथ देखा है. आपको चाहे सोशल मीडिया पे देखें, चाहे टीवी पे, चाहे वो जो एनसीबी ब्रीफिंग्स, बट हैट्स ऑफ टू यू. व्हाट अ जर्नी यू हैव लिव्ड, व्हाट अ लाइफ यू हैव. वो कहते हैं ना, कई बार तो मजाक में कह रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज. ऐसी लाइफ तो सही में मैं कहूँगा, हम दुश्मनों को भी नहीं कहेंगे कि ऐसी लाइफ वो एक्सपीरियंस करे जो आपने देखा है. बट दिस स्माइल ऑफ योर्स, दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू अस. आप हर सिचुएशन में इस तरह से निकले हो समीर. आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू. आई एम सो प्राउड, and I really cannot thank you enough on behalf of entire SSR warrior family, in entire SSRian community, as well as my countrymen, or मैं तो कहता हूँ globally around the world. We all are so very proud of you, and thank you so much. थैंक यू वेरी मच. वरुण जी, मैं दी स्टार्ट ये बोलना चाहूँगा कि मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये लेवल पे लोगों की सेवा, देश सेवा करने के लिए इसका अवसर मिला. मुझे जितने भी मेरे 16 साल के करियर में, तो मैं तो सच में बहुत भाग्यशाली हूँ. नंबर 1. नंबर 2, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सच्चाई की राह पे आदमी काम करता है, ये सबने देखा है. इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताता है कि सत्य क्या है, कि परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं हो सकता. बिल्कुल. तो अगर देश सेवा करने के लिए, अपने देश को साफ करने के लिए, ये गंद हटाने के लिए अगर आपको घुसना पड़ता है इस कीचड़ में,
तो इसमें तो गंद उछलेगी आप पे, नंबर 1। और नंबर 2 कि आप लोग का साथ, पूरे देशवासियों का साथ इतना हार्ट वार्मिंग रहा है और सबको पता है सच्चाई क्या है। बिल्कुल। तो उसमें मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली पिछले, ये स्पेशली पिछले 4 महीने में, जब कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के एलिगेशंस, कई प्रकार की पीड़ा, फैमिली पीड़ा, जिसने करना है, जिन्होंने किया, गलत लोगों ने काफ़ी उल्टी सीधी बातें की, हर फोरम पे बातें करी ये लोगों ने। लेकिन जो पब्लिक सपोर्ट, आप लोग का सपोर्ट रहा है, उस चीज़ के लिए मैं आपको काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इट वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। तो आई एम फॉर्चुनेट कि पहली बात है देश सेवा करने का मौका मिला है, आई एम फॉर्चुनेट कि पीपल लाइक यू, पूरा देश साथ में खड़ा रहा इन सब बुराइयों से लड़ने के लिए। मैं इसके लिए कहता हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड भाग्यशाली हूँ मैं इस चीज में। That's the humility, Sameer, we all are fans of. इतनी hardships करने के बाद, देखने के बाद भी, this is the man. And I don't, again, without I just want to take a second here. I want to introduce you to Colonel RDX as well, another nationalist, another hero of our country, who is now taking care of, building the right narrative for a younger generation as well. So welcome, Colonel, and you're mute. You're mute. You are mute. गुड इवनिंग कर्नल साहब। आप म्यूट हैं कर्नल साहब। आप म्यूट है. We can't hear you. We can't hear you. We can't hear you. Can you hear me? Yes. Right. So I said Jai Hind, and Jai Hind to you, Sameer, and Preeti ji and Varun, and Sameer, Jai more Hind. to you, because one knows one has been through what you are going through in life. It is a very tough life when you stand with truth and fight for it. And just to correlate, the persons whose spirit we are today trying to cherish as a memory, a sweet memory there, is also a person who I believe met the fate he met, the wrong fate, because he stood up for somebody, right? Otherwise, if he had not stood up for something which was the right thing to do, probably he would have also rejoiced a glass of champagne today on his birthday. So that is the way people who stand with truth at times face the adversity. They don't succumb, they fight. And I see that fight in you, Sameer, and I'm so proud of it. So I just, Thank you, I'm so Colonel happy to meet you at this platform. Don't mind my attire. I'm in a marriage and going back to a marriage, Varun. So, No, absolutely. so, This is so one in thing, my Sameer, I just want to have to tell you, all of them, right? अभी मैं एक दो लोगों को और भी ऐड करता हूँ अभी. All of them just wanted to be here. One, of course, for Sushant. They've all been vocal. Second, when they knew it was Sameer Wankhede, अब देखो, this man, on the top, uh, I think he slept only for 4 hours, or I don't know, flight में सोए हैं कि नहीं सोए हैं, वो मुझे नहीं पता. Oh, 1.5 Okay, since yesterday 7 o'clock in the morning. perfect. And he's still That's here. good So enough. I'm, That's good enough. yeah, I'm really happy. All right, Preeti ji, please. सबसे पहले तो आपसे ही शुरू करेंगे. Sushant Day and Sameer is here, and why don't you talk a little bit about everything that's going on? पहले कर्नल साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं. यू डोंट हैव टू बी सॉरी. पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपके Thank you. सर. Thank you. तो, Thank you. This आप is the आए first pagadi somebody has tied on my head, being from a civilian background. Otherwise, I had very good, Fauji's tying the pagadi. But I think if you're appreciating it, अधिकतर it आपकी must be ट्वीट्स good. देखती रहती हूँ और पिछली बार शो में आपके साथ शामिल हुई थी. और समीर जी के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि समीर जी का ये जो पूरा इशू चला, समीर जी बहुत सारी दवाइयां प्लीज मेरे गले के लिए भिजवा दीजिएगा दिल्ली, क्योंकि आपके परिवार पे डिबेट करते करते मुझे ऐसा लगा कि एक समय तो मैं अपनी वॉइस खो दूंगी अब. You are a lioness. You are a lioness. Let me tell you. Well said. Well said. लेकिन सबसे अच्छा ये रहा, ये जो समीर जी आपने बात कही, सही बात है. इन्होंने पूरी कोशिश की थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिश की कि जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत चीजें दबाने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीजें कोर्ट में है तो वी कांट डिस्कस. लेकिन एक चीज जरूर है कि जब सच सामने आता है तो जो लोग हैं, जो उसके गुनहगार हैं, वो अचानक से अपने बिलों से निकल के क्या क्या किसके किसके खिलाफ कर सकते हैं, कौन से 10 साल पुराने पेपर लाए जा सकते हैं, कैसे कौन सी फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, सब कुछ
कोई ऐसा आयोग नहीं था जो आपके केस में नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं। मतलब फिल्मों में हम देखते थे कि जब कोई ऑफिसर किसी गुनहगार को कोर्ट लेके जा रहा होता था, तो वो कोर्ट ना पहुंचे इसके लिए क्या क्या चीजें की जाती थी। उसके गाड़ी के एक्सीडेंट से लेके उसके परिवार को गायब करने से लेके सारी चीजें हुई। और मुझे याद है कि एक डिबेट में मैं थी और आपकी सिस्टर थी वहां पे, और जिस तरीके से आपके परिवार को लगातार धमकियां मिलती आई हैं, ये पूरे देश ने देखा है। और मैं आपको बताऊं, आज सुशांत का जन्मदिन है, तो एक चीज जरूर कहूंगी कि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के जो गुनहगार हैं, जो उसमें हुआ, भले वो चीजें अभी क्लियर नहीं हुई, लेकिन कर्मा रिटर्न्स, एक एक व्यक्ति जो गलत कर रहा था उस समय से लेके आज तक, या तो वो सलाखों के पीछे है, या वो जाने की तैयारी में है, या अगर किसी बड़ी गद्दी पे भी बैठा हुआ है तो वो एक्सपोज्ड है, अगली बार वो गद्दी पे आने वाला नहीं है। एब्सोल्युटली प्रीति जी। और जो जो आपने कहा, राइट, डिबेट्स पे हम आपको देखते थे, जैसे आप बात करती थी फॉर सबीर, मैंने यास्मीन जी को भी देखा, उनसे तो कई बार ऐसा लगता था कि गलती से भी नवाब मलिक कहीं आसपास ना आ जाए, और जिस तरह से जो हुआ, बट उनको छोड़ते टॉपिक को, पर उन्होंने तो जो करना था कर लिया। दिस मैन इज रियली द विनर, द रियल विनर, बिकॉज एंड ऑफ द डे जरा सा भी हिला नहीं सके। बट अब करते हैं थोड़ी सी बात समीर, आपकी हिस्ट्री, और मैं सबसे पहले स्मिता जी को भी यहाँ देख रहा हूँ। वेलकम स्मिता जी। एंड नमस्कार टू ईच वन ऑफ यू, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप नमस्कार सभी स्मिता बहुत जी। स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं और सल्यूट है मेरा आप सबकी इंडिविजुअल स्पिरिट्स को। Thank you. और yeah, so let me go back. Sameer, for the last 19 or almost 2 years, जो आप एनसीबी थे, ये जो क्लीन अप हुआ, जो गंदगी निकल के सामने आई, हालांकि मैं क्वेश्चन ये नहीं करना चाहता कि आपसे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई एम श्योर काम हो रहा था, बट अगेन रिलेटिंग टू व्हाट हैपेंड आफ्टर this Sushant Singh Rajput case, this cleanup took a totally different angle. Can you talk us, and can you tell us a little bit more about the journey? देखिए, ये I joined NCB in 2020 after say about in the month of September first week में, Right. एंड यही मंशा से ज्वाइन किया था कि हम लोग, आई वॉज इन DRI बिफोर दैट, एंड DRI जनरली क्या करती है कि दे फोकस ऑन बिगर केसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन से बड़े बड़े कंटेनर्स या फिर बिग बिग केसेस जहाँ पर आते हैं, तो वो सब केसेस DRI और बड़ी बड़ी एजेंसीज फोकस करती है। लेकिन बीइंग ऑन दैट साइड ऑफ द लॉ, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ये जो पेडलिंग नेटवर्क, कंजम्पशन, जो यूथ यंगस्टर्स, तो वो चीज़ का मौका मिला एनसीबी में आने के बाद में वो क्लियर करने का, शहर को, स्टेट को। तो आते के साथ में जब हमने देखा कि ये एक घर घर की प्रॉब्लम हो गई है, एक यूथ जो बच्चा होता है, जो कॉलेज में बच्चा होता है, तो इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन नॉर्म फॉर देम, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। जिस हिसाब से हम लोग चाय कॉफी पीते हैं, उस हिसाब से इट हैड बिकम सो कॉमन। धड़ल्ले से हर स्ट्रीट पे, हर इलाके में देयर वर बटे हुए गैंग्स, ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स जो काम कर रहे थे बच्चों को ड्रग्स, और यूथ को और कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स पहुंचाने का। तो मेरा प्रायोरिटी था कि ड्रग्स को पहले कैंपस फ्री करना है ड्रग्स के खिलाफ में, और स्कूल को बेसिकली ये सब स्कूल के बच्चों तक ना पहुंचे और कॉलेज के बच्चों तक ना पहुंचे। हमारे भी बच्चे, हमारे भी यंग है, यूथ है, और देश की जब भी हम लोग बात प्रगति की करते, डेवलपमेंट की बात करते, तो यूथ फोर्स के बारे में पहले सोचते कि जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट आपकी यूथ पॉपुलेशन कितना कर सकता है। तो इट वाज अ डायरेक्ट अटैक और टू आर बेसिकली व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हमारे कंट्री पे डेवलपमेंट पे डायरेक्ट अटैक था ये। सेकेंडली, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग के साथ में काफ़ी डेंजरस कनोटेशन आता है जिसे नार्को टेररिज्म कहते हैं। सो ये अपार्ट फ्रॉम स्पॉइलिंग योर हेल्थ, हमारे देश का सोशल फैब्रिक, हमारे देश का सिक्योरिटी, हमारे देश की इकोनॉमी भी डायरेक्टली अटैक करता है। सो आज हमारे देश में देखेंगे कि दो प्रॉब्लम्स व्हाट वी आर फेसिंग इज, एंड आई एम श्योर कर्नल साहब भी इस चीज़ में सहमत होंगे कि वन इज टेररिज्म विच इज़ अ मोस्ट हीनियस थिंग एंड मोस्ट डेंजरस थिंग व्हाट वी आर फेसिंग, एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज द ड्रग ट्रेड व्हाट वी आर फेसिंग इन द कंट्री। ये मेजर क्राइम्स दो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो सेकेंडली, बीइंग इनटू एनसीबी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अगेन मैं भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया
1.5 साल यहाँ पर काम करने का, क्लीन अप करने का। तो आते के साथ ही हम लोग ने डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्टेड टारगेटिंग दी ड्रग पेडलर्स एंड दी सप्लायर्स। मैं कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी प्रोफेशन स्पेसिफिक बोलना नहीं चाहूंगा, बिकॉज बट इट इज अ जनरलाइज प्रॉब्लम इन ऑल द सोसाइटीज, ऑल द प्रोफेशंस। कोई एक प्रोफेशन को वी कैन नॉट जनरलाइज दैट। तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट एंड फॉर्चुनेटली विद इन अ स्पैन ऑफ 14 months काफ़ी अच्छा रिस्पांस पब्लिक का भी आया, काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे पास में आई, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया हमारा इस बुरी चीज़ को एलिमिनेट करने का। एंड अगर आप ये भी देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे, तो लगभग 117 केसेस हमने किए मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा में। उसके अलावा भी 350 लोगों के ज़्यादा 350 लोगों से ज़्यादा जो हार्डकोर सप्लायर्स थे, पेडलर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनको हमने अरेस्ट किया, उनको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। उसके अलावा भी अराउंड 1.8 टन ड्रग्स यानी 1800 किलो ड्रग्स भी पकड़ा हमने। ये भी काफ़ी अलग अलग प्रकार के ड्रग्स थे, जैसा कि ट्रेडिशनल ड्रग्स के अलावा भी चरस, गांजा, LSD, मेफेड्रोन, मेथाम्फेटामाइन, कोकेन। उसके अलावा भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने कोई एक सोसाइटी या फिर एक प्रोफेशन को ही हमने फोकस किया। इन 350 लोगों में से मेजर तो हार्डकोर पेडलर्स, जिसमें के बहुत सारे गैंग्स है, 14-15 गैंग्स थे जिनके ऊपर हमने एक्शन किया। जो कार्टेल थे, जैसे पठान कार्टेल, देन दाऊद इब्राहिम के कुछ गैंग मेंबर्स है, उनके ऊपर हम लोग ने एक्शन किए। तो इन ऑल हमारा मेजर फोकस था ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स और ऑर्गेनाइज गैंग मेंबर्स को करने का, एंड वी हैड सक्सेसफुली डन आवर जॉब इन दैट। ड्रग्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था शहरों में, गलियों में। और उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम टेकिंग एनफोर्समेंट एक्शंस आल्सो, वी हैड मोस्टली फोकस्ड ऑन दी सोसाइटी आल्सो। NGOs के साथ में मिलके भी काफ़ी मस्जिदों में, काफ़ी टेम्पल्स में हमने ये भी कोशिश की थी कि वहाँ पर जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करें, लोगों को अवेयर करें। पेरेंट्स एसोसिएशंस के साथ भी काफ़ी हमने मीटिंग्स करी थी। तो in all, it was a very fruitful experience and a very good journey what I had working in NGB. Great. Preeti ji, feel free to talk. Feel free to chime in. Kabhi bhi, Preeti ji, Smita, if you want to add something. श्योर समीर सर, आपसे तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, हमेशा जब भी देखती हूँ मैं आपकी वीडियोस या आपके बारे में न्यूज़, तो इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग, इतना ज़्यादा डायनामिक, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड ऑफिसर हिंदुस्तान में बिरले ही देखने को मिला है। और दुख की बात यह है कि मुझे आपका ये 1.5 साल का जो स्पैन है ये बहुत कम लगा, क्योंकि ड्रग्स के ये जो नेक्सस है ये इतने जड़ों तक पहुंच चुके हैं, न सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, हर जगह पे पहुंच चुके। तो इसको जड़ से निकालने के लिए 1.5 साल का स्पैन बहुत कम था, एंड मुझे इस, और मेरे साथ हजारों लाखों ऐसे लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से जिन्हें इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि अब वहाँ नहीं है। तो एक दिल को ये सुकून नहीं आ रहा कि अब क्या समीर सर की तरह कोई उस तरह से काम कर पाएगा जिस तरह से आपने एकदम बेझिझक निडर होकर काम किया। इतने बड़े बड़े माफियाज और इतने बड़े बड़े गैंग्स के ऊपर आपने हाथ डाला और उन्हें अरेस्ट किया। तो ये ना एक बेचैनी सी हो गई है आपके 31 दिसंबर के बाद से। देखिए, इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं स्मिता जी, क्योंकि नंबर 1 है कि हमारी जो एजेंसी, इट इज़ नॉट पर्सन स्पेसिफिक। मेरे पहले भी काफ़ी बढ़िया काम किया इन्होंने और करते आए हैं। बाकी की भी काफ़ी एजेंसीज है, सिस्टर एजेंसी, जो काफ़ी बड़े बड़े केसेस कर रहे हैं। एंड वी वर जस्ट डूइंग आवर हम्बल एफर्ट। तो ऐसा नहीं, मेरे बाद भी आई एम श्योर दे विल बी डूइंग अ गुड जॉब। मेरे पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया है। और क्या है कि वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड वी जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। हमें जो ऑर्डर मिलते हैं हम करते हैं। मेरे बाद भी जो ऑफिसर आएगा या मेरे बाद में भी जो आएंगे, आई एम श्योर दे विल बी डूइंग अ गुड जॉब। सो निराश होने की ज़रूरत नहीं। और मैं भी जो मेरी कैपेसिटी में जहाँ पर भी जाऊँगा, आई विल बी डूइंग द ओनली थिंग विच आई हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 16 years इज देश सेवा। बस, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, इसमें करते रहेंगे सर, जो अपॉर्चुनिटी देंगी जैसे सरकार। ऑफिसर रहे और आप रहे खास तौर पर, तो बहुत हौसला बनता है। मैं इस प्लेटफॉर्म की इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ मैंने पर्सनली आपसे शेयर की थी अनाउंस करना चाहती हूँ। सुशांत की बर्थडे है आज, बहुत बड़ा दिन है।
सुशांत डे मना रहे हैं हम। तो लिटो फेस्ट, क्योंकि सुशांत और मेरा एक सपना है, जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है आर्ट, कल्चर, म्यूजिक और लिटरेचर का। लिटो फेस्ट की तरफ से आप सभी से मुखातिब होकर मैं बताना चाहूंगी कि हम समीर वानखेड़े सर को इस साल भारत का बेटा अवार्ड से नवाजना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। You're not supposed to tell him. Confidential Thank you. awards and recognition. Well नहीं, done. Thank क्योंकि ये हमारी पूरी एडवाइजरी और हमारे बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि हम लोग हर फील्ड में, Very आर्ट, nice. कल्चर, लिटरेचर में, लेकिन हमने अभी तक ब्रेवरी के लिए नहीं सोचा था। लेकिन ब्रेवरी के लिए ये अवार्ड जो है, शूरवीरता के लिए समीर वानखेड़े सर को ही इस साल हम देने की सोच रहे हैं। Thank you. I'm really honored. I'm humbled. I'm really honored. Thank you very much, Preeti. थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग इट। Right. Perfect. That's a very sweet thing on Sushant Day. प्रीति जी, आप अभी इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में क्या कहेंगे? चलो यहीं से शुरू करते हैं। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी वरुण। मेरे को तो, मैं एक बात बताऊं, वैसे इतने समय से हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने, जैसा अभी समीर जी ने कहा है, वो बड़प्पन है उनका। और मैं मानती हूँ कि बहुत सारे ऑफिसर सर होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सर, लेकिन मैं पिछले 10 साल के अपने सोशल करियर में नहीं जानती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं 10 साल में मैं बिल्कुल नहीं जानती कि समीर वानखेड़े जैसा कोई व्यक्ति, जो बहुत बड़े बड़े लोग जो सत्ताधारी हैं, चाहे विपक्ष में हैं, चाहे बड़े किसी दूसरी इंडस्ट्री से आते हैं, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे जिसका रसूख हो बहुत, जिसके पहुंच हो बहुत, पैसे वाला हो बहुत, जो रातों रात तख्ता पलट करने की बातें करते हैं, इस तरह के लोगों से पंगा लेने वाला व्यक्ति तो मैं नहीं जानती। स्मिता जी, मुझे लगता है आप भी नहीं जानती होंगी। बिल्कुल सही बात है। ये उनकी एक्चुअली ह्यूमिलिटी है कि वो ऐसे बोलते हैं कि Exactly. इतनी निडरता से काम करेंगे, लेकिन हमने तो नहीं देखा, ना हमारे दूसरी पहले चीज, की पीढ़ी ने देखा है। एनसीबी जो एजेंसी है वो ड्रग्स पे काम करती है, और इस तरीके से भी काम हो सकता है, ये तो हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद देखा सर। हो बिल्कुल सकता है सही। ये एजेंसी बहुत सालों से हो, बहुत सारे लोग इसमें हो, काम करते हो, अलग पोजीशन पे हो, और इंटरनल भी, आई एम श्योर कि इंटरनल भी एजेंसीज काम करती हैं, जो लाइमलाइट में नहीं आता, जो मीडिया में नहीं आता, इंटरनली आप उसकी सफाई कर रहे होते हैं। लेकिन सर, अगर इस तरीके से काम होता ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि 1.5 साल, आप 1.5 साल थे वहां पे जोनल है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्या देश में वो सफाई नहीं हो सकती थी सर? वो अंदर से मिशन नहीं था, वो अंदर से वो चीजें नहीं थी कभी। चाहे आप रसूख वालों से डर जाते हैं लोग, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे उनके ट्रांसफर, कोई ऑफिसर अच्छा काम कर रहा होता है तो सबसे बेस्ट है उसको ट्रांसफर कर दो, उसको सेंटिंग पोजीशन पे भेज दो, ऐसी जगह भेज दो, वो बिल्कुल वो होता है ना, पुलिस से निकाल के ट्रैफिक में डाल दो। तो कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं। इसमें जिम्मेदार जो होता है वो कभी कभी सरकारें भी होती हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं, और हम सरकार में नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व रखते, तो ये बात हम बिल्कुल ओपनली ये बात कहते हैं। एज ए एक्टिविस्ट तो ये बात मैं कहती हूँ कि अगर कोई ऑफिसर इतनी तेजी से सफाई कर रहा है, तो उसको 1.5 साल नहीं, उसको 15 साल का कार्यकाल वहीं दे देना चाहिए। कि अब रोज, चाहे नेता छीटाकशी कर रहे हो, चाहे ऑफिसर्स के परिवारों को धमकियां दे रहे हो, वो सब कुछ तो सर चलता रहेगा, लेकिन 15 साल, 10 साल, 5 साल एक जोन में एक ऐसे ऑफिसर को वाकई सरकारों को रखना चाहिए, अगर एक्चुअली सफाई चाहिए तो। जब तक वो व्यक्ति सारे एरिया को समझता है, काम करने की कोशिश करता है, आप उसको उठा के कहीं और भेज दीजिए। ट्रू। ऑफिसर तो बड़े बड़प्पन के साथ ये बात कह देते हैं कि आप जहां भी जाएंगे सर, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, नो डाउट। लेकिन जनता को इतनी उम्मीदें आपसे हो गई हैं कि वो बेंचमार्क जो आप सेट करके जा रहे हैं, वो अगला ऑफिसर कर पाएगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट महाराष्ट्र, मुंबई, आप स्कूल कॉलेजेस में, आप झुग्गियों के बाहर, मैं तो झुग्गियों में, स्लम्स में बहुत काम करती हूँ, स्लम्स के बाहर जब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आके खड़ी होती थी, तो मैं ये समझ नहीं पाती थी कि इन स्लम्स में ये इतनी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार, ये बड़ी गाड़ियां क्यों खड़ी होती। आई वॉज ऑल्सो इन न्यू दिल्ली में आई थी मैं बनारस से, तो मैंने कभी इस तरह का माहौल देखा भी नहीं था। तो जब आई तो पता चला कि अच्छा, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि इन स्लम्स में भी, स्लम से चरस, गांजा और पता नहीं कौन कौन से नशे की चीजें हैं जो यहाँ से सप्लाई होती हैं, जाती हैं। कई बार ये लोगों को पता भी होता है, कई बार नहीं पता होता है, कई बार पैसे से लेन देन होके जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी चुप हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर जगह है, और ये इस तरह नार्को टेररिज्म के बारे में जब मैं कहती हूँ चैनल डिबेट्स पे, तो लोग हंसते हैं इस बात पे कि नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए। हम नहीं लेके आए सर। अगर देश बर्बाद करना है तो एक तो कहीं बम फोड़ दो, जो हो ही रहा है पाकिस्तान से और अलग अलग कंट्री से देश के लिए। नार्को टेररिज्म इसलिए हो रहा है कि वो धीरे 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 जड़ों में आएगा। 25 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपका देश जो भविष्य आने वाला है, 10 साल बाद, वो आज ही बर्बाद हो जाएगा।
तो आपके देश को बर्बाद करने के लिए नार्को टेररिज्म, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ा टर्म है और ये 360 डिग्री एंगल पे सर भारत के लिए यूज हो रहा है, भारत के खिलाफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई 100% नहीं, मैं 500% आपसे सहमत हूँ। प्रीति जी, जो नार्को टेररिज्म है, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ। ये एक स्ट्रैटेजी है हमारे यूथ को डाइवर्ट करने की, डिस्ट्रॉय करने की, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड एंड वी नीड टू वेक अप टू दिस थ्रेट। सो भले ही हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी टाइम देना पड़े, लेकिन नाउ आई एम श्योर अबाउट इट कि जितनी भी हमारी जो प्रणाली है, जितनी भी हमारी यंत्रणा है, सरकारी यंत्रणा है, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट एंड वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। मैं यहाँ हूँ या किसी और जगह पे भी हूँ, तो वी दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी व्हाट वी आर फेसिंग। यूथ, बच्चे, हर, जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑल्टरनेट घर, यानी आई एम नॉट ट्राइंग टू एग्जैजरेट द थिंग्स आउट हियर। जो मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे इस कार्यकाल में, इट इट हैज़ बिकम अ बिग टाइम प्रॉब्लम। माएँ हमारे पास में आती है, बहनें हमारे पास में आती, इतने मेल्स हमारे पास में आते थे वो टाइम पे कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, यू काइंडली ट्राई टू इंटरवीन इट। बच्चा भी जब पढ़ाई करता है, यूथ जब कॉलेज में जाता है, ये ड्रग की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जब कंजम्पशन करने के बाद में उसे ये फर्क पता नहीं चलता कि उसकी माँ कौन है, उसकी बहन कौन है या उसकी वाइफ कौन है। सो ये परिस्थिति इतनी सीरियस परिस्थिति है। बच्चे अपनी माओ से, अपनी सिस्टर्स की ज्वेलरी चोरी करते हैं टू केटर टू देयर कंजम्पशन थिंग्स, यही पैसे जाते हैं, यही ऑर्गेनाइज ड्रग सिंडिकेट्स के पास में, यही पैसे जाते हैं कि उन क्रिमिनल्स के पास में जो बाहर पैसे फिर बाद में विदेश में भेजते हैं। वहाँ पर दे डिस्कस, दे स्ट्रैटेजाइज, दे प्लान हाउ टू मैन्युफैक्चर, हाउ टू सेंड ड्रग्स टू द कंट्री। सो ये पैसे बाहर जाते हैं, यही सब नेफेरियस चेन और सर्कल और साइकिल चलती है। इसे माइक्रो लेवल पे समझना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन एट अ मैक्रो लेवल इट्स अ वेरी बिग थिंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री, so we try to do our best, we still will try to do our best. Coming to Preeti ji, second point also, जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, जो हम लोग फिल्म्स में देखते हैं कि जब भी हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये 2-3 चीजें प्रीति जी आपको ये कहना चाहूंगा कि पहली बात है कि हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश के जो कायदे, जो कानून हैं, जो एक्ट्स हैं हमारे, सो मेरा ये मानना है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया देश की सेवा करने के लिए, पहली बात। सो मैं कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता। एक रूल, दो इंसानों पे, दो अलग अलग श्रेणी के लोगों के ऊपर मैं वो चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। वन रूल इज इक्वल फॉर एवरीबडी, एंड ये चीज के लिए मुझे भारत के सरकार ने, और यही चीज के लिए राष्ट्रपति ने, यूपीएससी ने मुझे अपॉइंट किया है यही काम करने के लिए। नंबर 1 इज दैट। नंबर 2, जिन लोगों के साथ में ये जो ड्रग माफिया है, ये जो ड्रग सिंडिकेट है, दीज आर वेरी पावरफुल पीपल, वी नो दैट वेरी वेल। माइट पावर, मसल पावर, मनी पावर, दे हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। ये तो मैं मूवीज में देखता था, जो आपने कहा है कि हाउ ये लोग, और पढ़ता भी था इनफैक्ट, हाउ ये फैमिली को टारगेट करेंगे, आपके पर्सनल इंटीग्रिटी पे टारगेट करेंगे, आपके फैमिली पे टारगेट करेंगे, आपके सिक्योरिटी पे टारगेट करेंगे। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे लेकिन ये चीज का बहुत एक पर्सनल लेवल पे बुरा लगा कि दे शुडंट हैव टारगेटेड माय फैमिली, ठीक है, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, आई एम ओके विथ बीइंग स्क्रूटनाइज्ड इन पब्लिक। और मैं, अगर मेरे बारे में कोई कंप्लेंट करता है, मेरे बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरी कोई क्रिटिसिज्म करता है, इट्स ओके, मैं उस चीज का कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ। माई लाइफ इज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी एंड आई एम आंसरेबल टू द पीपल, बिकॉज मैं पब्लिक का नौकर हूँ, पब्लिक का सेवक हूँ। लेकिन मेरी फैमिली, मेरे जो मैं केसेस करता हूँ, मैं जो ड्रग के खिलाफ केस करता हूँ, मैं ये स्मगलर्स के खिलाफ जो केस करता हूँ, तो उससे मेरे पिताजी का, उससे मेरी वाइफ का, उससे मेरी सिस्टर का, उससे मेरी सिस्टर इन लॉ का कोई, या मेरी मृत माँ का कोई लेना देना नहीं है। सो दिस वॉज वेरी सैड कि ये लोगों को फेस करना पड़ा। लेकिन मैं ये भी काफी फॉर्चुनेट हूँ कि इस फैमिली में पैदा हुआ हूँ कि जहाँ पर औरतें मेरी शेरनी है। तो वो औरतें, ये बाकी के जो सब एलिगेशन लगा रहे, वही काफी थे उनको भिड़ने के लिए। सो दे टुक इट वेरी पॉजिटिवली। अभी उस बारे में मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि काफी फोरम्स में, काफी कोर्ट्स में, काफी माननीय न्यायालयों में हमने भी काफी मैटर इज सब जुडिस, तो मेरा उस बारे में भी बोलना ठीक नहीं रहेगा ऑन एनी प्लेटफॉर्म। लेकिन काफी अच्छी जंग लड़ी सच्चाई के लिए,
अगेन मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग सब लोग मेरे साथ में थे, पूरा देश साथ में था, उसके लिए मैं आप लोगों का काफी धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं कि आप लोग पीछे रहने के साथ में हमारी हिम्मत बढ़ती गई सच्चाई के लिए लड़ने के लिए, एंड वी स्टूड विक्टोरियस। आज देश को सबको मालूम है कि क्या चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। मुझे उस बारे में जानना भी नहीं है और मैं जाना भी नहीं चाहता उस बारे में। आई डोंट वांट टू गो टू द मेरिट्स बिकॉज ऑनरेबल कोर्ट्स आर लुकिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स नाउ। Great, wonderful. And और Colonel, और और ए, 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 Yeah. और हाँ, एक और बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बाकी के भी जो हमारे साथ में जो पुलिसकर्मी है, सिविल सर्वेंट्स है, आईआरएस ऑफिसर्स है या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है, तो उनको भी ये चीज का एक काफी एक आइडिया मिली कि वी शुड नॉट बी स्कैर्ड टू सच थिंग्स। हमें इनके कोई भी प्रेशर्स में सकम नहीं करना है। ये ड्रग माफिया, ये ड्रग कार्टेल, जो जो ये लोग ने करने की कोशिश की, एक दृढ़ निश्चय कर लें कि जब फाइट करना है तो पूरी गिव योर 100% टू इट विदाउट केयरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे चैन से नींद आती है, इस 4 महीने में मैं चैन से सोया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। ट्रू। चाहे कोई भी, कितनी भी फोर्सेस आ जाए, कोई भी, कितने भी लोग सामने से, कोई भी माफिया आ जाए, कोई भी आ जाए, मुझे मालूम है कि मुझे डरना नहीं इनसे क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। Well said. और मैं यहाँ पर I'll take Colonel here as well. Colonel, from your background that you're from, would love to know, you have seen the journey that Sameer Yeah, has Varun. gone through. Okay, Be- मैं इसलिए थोड़ा सा चुप हो Before गया I, हूँ because अगर मैं कुछ बोलूं, जो भी हाँ, बात बोले की है, पहले आप बोले फिर पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रीति जी की आयु काफी लंबी हो, कि वो समीर जैसे और देश की सेवा करते हुए और सच के साथ खड़े अफसरों को देखे अपनी जिंदगी में, क्योंकि अगर इन्होंने अभी 10 साल में एक ही देखा है तो आई थिंक she needs to live much longer to see more happening as a change in India, because the next generation, I believe, should be better than us. ये बोलते हुए ये भी बोलूंगा, आप लोग देख रहे हैं समीर जी को एक ऐसे व्यक्ति के नजरिए से जो अपना कार्य कर रहे हैं। मीडिया ग्लेयर है, हर तरफ से धमकियां भभकियां हैं और लांछन लगाए जा रहे हैं परिवार के सदस्यों के ऊपर, जिसकी उन्होंने पूरी टिप्पणी की और थोड़ा उन्होंने आपको संकोच किया क्योंकि ऑब्वियसली सब जुडिस है। मैं आपको बताता हूं कि पैरामीटर क्या होता है एक इंसान में। कैरेक्टर, कन्विक्शन और विल। जब तक आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, और कैरेक्टर दो ही चीज सोच सकता है, देश के लिए, सुशासन के लिए, सत्य के लिए, उस तरफ, या अपने लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। दैट इज कैरेक्टर। उसके बीच में शेड्स ऑफ ग्रे होंगे। सिमिलरली अगर कैरेक्टर स्ट्रांग है तो कन्विक्शन आती है, जैसे कि समीर में आती है कन्विक्शन कि राष्ट्रपति ने मेरे को यूपीएससी क्लियर करने के बाद पार्चमेंट बेस सेवा में लाया है देश के लिए, ये काम ठीक से करने के लिए। कन्विक्शन सिर्फ राष्ट्रपति के बोलने से नहीं आती। कन्विक्शन आती है इनकी परवरिश से, इनके मॉरल एप्टीट्यूड से, इनके कैरेक्टर से। और जब कन्विक्शन दृढ़ बनता है तभी वो कन्वर्ट होता है विल में, एक्शन लेने के लिए। कन्विक्शन बहुत लोगों में होती है। 10 लोग सोचेंगे कि ये चोरी है, कितने उस चोरी को पकड़ के उजागर करेंगे, वो विल है। तो जिस इंसान में, महिला हो चाहे पुरुष हो, ये 3 जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। और उसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा मेरे को बोलने की आदत भी नहीं है अबाउट माई पास्ट हिस्ट्री एज वेल। मैंने एक केस पकड़ा करप्शन, और वो केस और जो था करप्शन का, सीधा टॉप तक जा रहा था। कोई ऑर्गेनाइजेशन दूध की धुली नहीं है, सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, पुलिस भी अच्छी है, एनआईए भी अच्छी, सब अच्छे हैं, बट करप्शन इज करप्शन, राइट। आपने कभी सुना तो होगा ही होगा, जैसे मूवीज देखते हैं आप लोग, देखते हो, मैं देखता नहीं। एक सेंटेंस बोला गया मेरे को दिल्ली से, मैं कहीं घूम रहा था, मेरे को बोला गया कि तेरे बीबी और बच्चा दिल्ली में अकेले रहते हैं, तेरे को डर नहीं लगता, राइट। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन व्हाट, नॉट माय कैरेक्टर। दे नो माय कैरेक्टर, राइट। Anybody who was telling me this knew my character. They were trying to reduce my will. And what was I standing with? The naked truth that this is a case of corruption leading till the top. Somebody should take care of it. I didn't go public. No, I don't have to go public. I have to fight that case on my ink and pen. And I'll tell you the power of conviction and will.
and don't quote me, but I'll just give a snippet here. More than 500 pages I wrote after. I had no lawyer. I was not as educated legally like Samir or anybody else. And it's a very clear Army Act. One line in that 500 pages plus wrong, I could be cashiered from service without pension, without any remuneration. Nothing happened. So truth has got the power to prevail. It has got an uncanny way of revealing itself. True. Yes, action may not be taken against these scoundrels or the thieves, right? But nobody can touch you. Samir, nobody can touch you. That's the last threat. So हमने चूज करना है हम किस गर्ज में रह के और किस डर से हारेंगे. डर एक ही है, मेरे देश के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए. That is for you also without a bullet being fired, and that's for me with the bullet or a gun in my hand also. It's the same conviction. It is easier to fight Pakistan on a LC because you know that Getachev is going to kill you if you don't kill him first. But what you do, as what you were doing for the longest time, Samir, is something which is born out of these three things I have told. It has got nothing of personal interest. आप सेवा कर रहे हैं जिसके लिए आपको सेवा में रखा गया है. True. Right? So this is how you have to see perceptions, and this is something I want the youth to understand. It's not that everybody's got a rosy life in the past or in the future. Challenges will come at you. You will be able to decide. People succumb. I have seen the greatest, people in my life, in all walks of life, keeping quiet, succumbing, not talking, thinking of careers, doing things. These are natural. Out of 100, it may affect 80. But the day out of 100, if it affects only 10, and I'm quite sure 0 will never happen in my country, the country will have a better character. And then from that character, we will bear a greater conviction in what we feel as a nation. And then we will have the greater will to act internally and externally. This thread of these three words is something which knits a person to abide by what he's supposed to do. It is something which makes a nation strong. And I totally believe, and that's why I'm saying, Samir, you may very politely say that, they try to put allegations against your family. I'm quite sure at the back of your mind, you, without being armed, without having the kind of sense of security which a policeman or an army man or an air force man or a naval person or a coast guard will have, or BSF or ITBP, you didn't have that, right? Whether you talk in a forum or not, this thought would always have crossed your mind. Should they do something to my family? Should they do something to me? To me is easier, because if they should do something to me and you, we are gone, right? So there's no regret. You don't have a past life to come back and haunt like a ghost. So matter is over. But this thought would have flashed you. Well, you have not spoken, in many forums. I'm quite sure the thought must have, come to you. One fine day, in the similar way, I got a call that, you'll be posted to X place, a very remote place. And they have done it to one more. And he got killed in 10 days' time. And that is when I, lost my shirt over a call one day. And I said, you know what? I said, try me. Right? I said, try me. And I said, now, since you have told me, go to the topmost chap and tell him to cancel this bloody posting. And if he doesn't do it by tomorrow afternoon, 5 media houses will have it. You can go ahead and do what you want to do. Nothing happened. I always believe the power of truth is much more than the scoundrels who can get together. And you talked about terrorism and narcotics. And Preeti ji talked about narco-terrorism. I think this narco-terrorism thread, while you said and alluded to how it goes back and comes back, create more chaos in a country. There is enough money riding, much money riding in our country today to make us weak, because we are an economic giant. Keep that in perception. Everything falls in place why it's happening against our country. Varun, if you permit me, I will have to go now. I have 14 minutes to go back to the venue. I'll come back again if you're there. Yeah, right, because just 30 seconds. Just 30 seconds. All I can think right now, and I'm a little kind of blanked out. The words that I have in my mouth right is my sister or our sister is here, and I would just have her on the screen because this is Sushant. This is Sushant Day. Hello, Priyanka. Namaste. Namaste, please. Namaste, Priyanka ji. Jai Hind. God bless you. Jai Hind, and welcome, and thank you so much, and happy Sushant Day to you. I know it's same to all of you. It's good to be here. Thank you. Thank you, and we all have been talking. Again, I can do a lot of talking, but I would rather have Samir.
you've talked to Keke uncle, and here's the daughter as well. You have done a lot in this case as well. Heartfelt gratitude, of course, from all of us. But Priyanka, anything you want to kind of first tell all the warriors as well as Samir, anything? I'm really speechless right now, but I'm really humble right now. Thank you so much for joining. First thing I would want to thank Sameer ji. It's a pleasure to see person like you, official like you. It's such a heartening thing, living this life, being a lawyer and having seen so much in life. We have lost faith somehow, not to say lost faith, but we know how things work in you know bureaucracy and everything. But to see you, the fresh energy and the commitment and the honesty is such a fresh air. It's so much reassuring. So yes, I have to thank you so much. Thank you very much. Thank you things very that much, I've Priyanka. got Thank you. as a result of Sushant's whole movement. To see you come alive like this, it's very heartening. Thank you. Thank you very much. Thank you. And on behalf of all the warriors, and every single SSRian, I'm sure today was definitely a very uh, you know not the pleasant day. Let me just put it this way. Okay, obviously you would have loved to celebrate this with your brother, like he's sitting behind you in a photo frame. I would have rather expected him to be sitting right next to you, cutting a cake, or just sitting with you. But पहले तो सुशांत डे की आपको and to your family, many happy returns. And like you can see right now, I am so overwhelmed. I've never been speechless in my life. Preeti ji, maybe you want to talk a little bit. मुझे तो डिबेट में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी मुझे अभी डिबेट में बोलने में, डिस्कशन में दिक्कत हो रही है। प्रियंका दी, पहले तो क्योंकि सुशांत का बर्थडे, और आपको सुशांत, आपके भाई, अब आपका भाई नहीं हो तो पूरी दुनिया का भाई है। बहुत सारे लोग, एक डिबेट में मुझे याद है कि किसी ने मुझे गालियां दी और कुछ कहा, तो वो तुम्हारा कौन लगता था? मैंने कहा हमारी 4 बहनें और 1 भाई है। वो फील कर सकती हूँ मैं कि अगर आपका एक भाई और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो तो कैसा फील होगा। पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुशांत हमारे बीच नहीं है, पर ये एक चीज आपको जरूर कहूंगी, मैंने आज ट्विटर पे भी यही चीज कही थी। 2 साल हो गए इस केस को। सुशांत ने जाते जाते हमारे बीच से, फिजिकली सिर्फ जाते जाते, मेंटली इमोशनली तो वो हम लोगों के साथ हैं ही, ऐसी ऐसी चीजें वो उजागर करके गए हैं, और ऐसी ऐसी चीजें उनके केस में बाहर निकल के आई हैं कि आज देश का हर युवा इस बात, जैसे नार्को टेररिज्म जो अभी समीर जी बात करे, चाहे वो ड्रग्स का एंगल हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल हो, चाहे उनके अकाउंटों से जो पैसे गए, और बहुत सारी चीजें, और किस तरीके से एक व्यक्ति मेहनत करके आता है बिहार से और अपनी अपनी एक कायनात बनाता है बॉलीवुड में, किस तरीके से सिर्फ एक आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ही एक केस कहूंगी, या इस केस के जरिए हजारों ऐसे केस पास्ट में भी जो हुए जिनके ऊपर पर्दा डाल दिया गया था शायद, और अब शायद भविष्य में कभी भी बॉलीवुड में वो नहीं होगा जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगत सिंह 23 साल में फांसी पे चढ़ गए क्योंकि वो एक मिशन के साथ आए थे। मैं सुशांत के लिए भी कहूंगी कि 34-35 एज में वो चले गए हमारे बीच से, लेकिन वो एक मिशन के लिए आए थे। शायद स्वच्छ भारत अभियान और जो क्लीनिंग चल रही है इस समय बॉलीवुड में गंदगी की, क्रेडिट गोज टू सुशांत सिंह राजपूत। तो एक्चुअली इट्स हिज बर्थडे, जिसकी वजह से हम जान पाए कि इतनी गंदगी है, एक्चुअली इतनी गंदगी है। और फैमिली को तो हेड्स ऑफ। और मैं भी अभी, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि जंतर मंतर पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मैं दिल्ली में उस दिन नहीं थी, लेकिन दीप, सारे एसएसआरएन की तरफ से सिर्फ एक चीज कहूंगी, जस्ट अ कॉल, जस्ट अ मैसेज, जस्ट अ ट्वीट, हम सारे बिल्कुल तंबू गाड़ के बैठ जाएंगे। कहाँ बुलाना है आप बता दो। थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम सब सुशांत को जरूर शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत थे, जब रहे भी तो बहुत ही खुशियां और बहुत ही वो कला को वो उस मुकाम तक ले गए जहां तक वो ले जा सकते थे, और जाने के बाद भी वो आज हर इंसान को वो जागृत कर रहे हैं कि
ऑनेस्टी कोई चीज होती है जिसपे शायद आज ऑनेस्टी एंड मोरालिटी को लेके उतना वो नहीं रह गया कि व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न. पीपल ऑलवेज थिंक कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, और ये मॉरल होके या वैल्यूज को ऑब्जर्व करके क्या ही मिल जाएगा, कौन मुझे पूछेगा. बट सुशांत इस बात को, आई थिंक ही स्टिल हाईलाइटिंग इट, which I'm so proud of, and it gives me immense joy because when he was there in his physical body, this is what we used to talk about. कि चाहे हम कुछ भी देख ले, किस तरह का भी सुप्रीमेसी देख ले, लेकिन जो मिसिंग है ह्यूमन life में, the evolution that humanity has gone through is that premium in being decent, decorous, dignified, and doing a thing for itself. There is a concept in philosophy which says ki, a thing for itself is a joy, not that it will not a means to an end, but means to should be an end. Even Mahatma Gandhi ne ye bola tha ki non violence is means and end in itself. So we used to talk about these philosophy. That's why I'm highlighting it. कि कोई चीज अपने आप में इतनी खूबसूरत है, इंसान बनना ही अपने आप में इतनी खूबसूरत चीज है, और एक इवोल्यूशन और हमारी जो कहते हैं ना शार्प इंटेलिजेंस शुड बी एबल टू टेल अस कि हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि हम वो काम करें जो वो काम करने में ही उसकी कहते हैं ना गरिमा है, ना कि वो कुछ हमें आगे देगा. So being a human being is a thing in itself, not that it will lead us to having let's say this, that or the other, और जो भी material चीजें हैं जो लोग कहते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो वो मिलेगा क्या. तो सुशांत भी उस line of thought से थे. That is why he could give so much of himself, and yet when he didn't have so much, let's say like when he joined an engineering college, he could have gone to have a very secure future, but he left it in between because he thought that evolving from inside, flourishing as a human being is more important than going by the thing कि हाँ मैं US जाऊंगा और किसी टेक कंपनी के लिए काम करूंगा और मेरे पास ग्रीन कार्ड होगा and all that. There are some parameters which society keeps in front of us, whereby we think now we are successful. So to leave it in the middle of it to pursue something which is the inner calling is a very, very beautiful thing to do. And Sushant did it time and again, be it when he was in college. Not that he came from a family which had like so much of money ki beta kuch bhi nahi bhi karoge to you have khandani business which you can take care of. It wasn't like that. He did it, he qualified in a competitive exam and got there, and yet left it in between to follow his heart. Then when he was doing very well in television, and he was earning the most, yet he left television and against a very dynastic Balaji studio. He left it in between. Not that he had another film to fall back on, but he just thought कि बहुत हो गया, ये मुझे challenge नहीं कर रहा है, this is not what I'm supposed to be, and there's more to me, and let me explore it. तो वहाँ भी उन्होंने छोड़ा. फिर YRF भी join जब उन्होंने 3 film contract था, उसको भी बीच में छोड़ा because there was some artistic disagreements and creative fallout. So he left it in between because he believed in honesty and in his own merits, rather than कि दुनिया क्या चाहती है और क्या मैं वो parameters पे खड़ा उतर रहा हूँ कि नहीं. तो ये बहुत बड़ी चीज है. और आज सुशांत डे पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी यूथ उनसे थोड़े भी ग्रेविटेट हुए हैं, those who have been affected by him and who thinks who can connect with him should also see this. This is what highlights him apart. This is what actually gives him another identity, that he was a very honest soul, that he worked for what should be done rather than what he wanted to do rather than what others wanted him to do. So it's very important. And we have Sameer here, and I think you belong to one such genre too, sir. So hats off to you. Good.
Thank you. Samir, I would love for you to kind of talk a little bit. Alaki, I know you have been involved in the case and you know a little bit, and you cannot reveal anything about that. But having said that, still there could be something that you can share around Sushant or specifically around this thing. Would love to hear that. वरुण जी, इसमें जैसा यू नो दैट द मैटर इज सब जुडिस Yes, एंड yes, इट इज इन वेरियस फोरम्स ऑफ द कोर्ट, सो yeah, इस केस के बारे में या कोई भी जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस है तो उस बारे में कोई भी टिप्पणी हम नहीं कर सकते. ठीक है. बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस प्रकार के केसेस हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए मिले. And the NCB in all and the MHA, they have done a wonderful job in that. जितनी भी कोशिश हमने की है, काफ़ी कोशिश की है इसमें, lot many hurdles भी जैसे कि investigations में, and we have overcome it and we have already filed a complaint in that. तो ज़्यादा उसमें कुछ कह नहीं पाऊँगा मैं अभी unfortunately. लेकिन my wishes with Priyanka ji, my wishes with all the fans of Sushant also. Let's see how तब आगे देखेंगे. और we should be very, हमारे जो न्यायिक प्रणाली है वो भी काफ़ी सक्षम है. So the NCB, I'm sure they will give their best in what the prosecution does in the case. Secondly, मैं अभी वरुण जी आपके चैनल थ्रू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहता था पहले भी, लेकिन क्योंकि आई वाज आल्सो वेरी मच टाइड अप इन लॉट मेनी थिंग्स, सो आई कुडंट से. आपके चैनल या माध्यम द्वारा मैं ये लोगों जो आप जो दर्शक हैं या जो सुन रहे हैं हमारे स्पेस को, सो आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट के हमारा जो MHA या फिर जो गवर्नमेंट का माई गवर्नमेंट है, माई GOV, तो उसमें जाके एक प्लेज ले लें ड्रग्स के लड़ने के खिलाफ में. तो वहाँ पर आप जाएं, माई GOV माई प्लेज पे जाएं, वहाँ पर ड्रग्स के खिलाफ प्लेज ले, एक ऑनलाइन प्लेज ले. उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और ड्रग्स के खिलाफ जंग जो हमारी चल रही है वो प्लेज लेने के बाद में सर्टिफिकेट डाउनलोड करें. और मैक्सिमम आप आपके रिलेटिव्स, आपके जो जानने वाले हैं उनको भी स्प्रेड करें. इसमें सिर्फ यही हम प्लेज ले रहे हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है ड्रग्स का, उसके खिलाफ लड़ने के लिए. प्लस स्कूल और कॉलेजेस जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे रिलेटिव जाते हैं, हमारे फ्रेंड जाते हैं, तो लेट अस टेक अ प्लेज कि हमारे कैंपस को, स्कूल के कैंपस को, प्लस यूनिवर्सिटी के, प्लस कॉलेजेस के कैंपस को ड्रग फ्री एनवायरनमेंट बनाए. तो ये हम शपथ ले ले, कसम ले. तो ये आपके चैनल थ्रू आई वांटेड टू स्प्रेड, यू नो वरुण जी. Sure. Thank you so much, Samir, for that. और मैं अभी आप ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा देर स्पेस में नहीं रह पाऊंगा वरुण जी, अगर परमिशन हो तो मैं फिर से आपके साथ जुड़ना चाहूंगा. तो बात करने के लिए, मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे कर्नल साहब, हमारे प्रीति जी, स्मिता जी, थैंक्स अ लॉट. एंड डेफिनेटली साथ में जुड़े रहेंगे हम लोग. एंड वी विल फाइट द ड्रग मेनेस. Yes. लोग शपथ लेते हैं, we will work together. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you so much. God bless you, Jain. God bless. Thank you very much. Thanks, sir. Thank you, Priyanka ji. Thanks a lot. Varun, Thank you. Yes, sir. Yes, Colonel. That's fine. Varun, Yes. I want to just say something to Priyanka ji. Sure, I please, don't know please, Priyanka ji personally at all, Please. nor did I know Sushant. Firstly, Priyanka ji, happy birthday, and you must celebrate. And I always believe there is always a positive future for everybody. And I'm quite sure one could see your eyes when you were talking on the main screen. A lot of pride is there, and pride emanates only because your brother was good and he did the right. He stuck his neck out and or was about to, as I understand from legal dominion, for a cause of a lady, her honor and her killing. And I think that's a very bold statement to stand by in today's. Otherwise, in Mumbai, people look the other way. So it's a good heartening factor. Having said that, I must say and confess, I don't watch Bollywood. I haven't watched any movie of Sushant. But you know what? When this news came in, so I was on Twitter and I went to the Google Chrome and I went and Googled that name, and then I went to images and some videos of his interactions, not the movies, interactions. Mm-hmm. And after about 45 minutes of Googling, I sent a message to Arnab that evening. I said, Arnab, it doesn't look to me to be a suicide at all. And that is a conviction of my assessment of people, their character, their eyes, their demeanor. And I was very sure.
and then whatever has happened has gone to the legal domain. I should not have any knowledge of it. It's fine. But I believe many millions today cannot be wrong. I want to say this, Varun, because I don't want to take a side on the legal part, but I want to say this. So many cannot be wrong. And if so many were wrong, there was no reason for the other side to create so many hurdles to, scuttle the truth or drowse the truth or drown the truth. And True. while your brother has met the eventual fate he didn't deserve, Priyanka ji, Yes. this, in my understanding, and I keep saying, is the longest serving case of a character of a society today, which I have seen to only grow in strength with every day passing. It has not been True. sublimed, it has not been subdued, no matter what. There are enough people joining in this movement to seek the truth for Sushant, to seek the entire, honor for what he has been through, because a lot of mudslinging happened and everything happened against him and against your family as well. So I believe you should draw a lot of courage from so many millions of hearts who are with your brother, and I'm quite sure those hearts will be with you in all the endeavors you do. And I will only request, I'm not too sure what you do. I actually said I don't know you, but if you're doing, it's fine. But if you can carry the small steps which your brother wanted to carry for the larger good of society, for anything he believed in, even as a hobby, and if you can't do it all, if you can write a small column and make the world understand what he believed to do better, I think you will get lots of hands across the world, in India, the diaspora, and also global netizens who will start emulating your brother in those small things he wanted to achieve. And that is a way to refine our country, society, and the world at large. So I'm not saying you owe it to us, but you do owe it to this fabric of refinement of our society, that you carry forward the legacy of Sushant by just sharing those thoughts when you are comfortable, if you are comfortable, and that's the way to go ahead. So we are with you. He is with Thank us in all these positive spirits which I see. We kicked off this day at 12 o'clock, and we'll close it at 11:59 probably. But I Yes. think between this day and what has passed over the years and what will come in the future, your brother, you should take a lot of pride and heart to convince yourself, because we are very convinced that he has ignited the passion in the youth and the diaspora and the citizens of this country to seek justice and truth at all costs. And if even if out of 100, 5 people change after seeing his journey and after getting inspired by the 2 million hearts who are bleeding for him today, I think this society will change, the country will change, the world will change. So I'm not looking at it as a case of a legality of a murder or a no murder. I'm looking at more as a societal change which your brother has ushered in at least a few million hearts across the globe. So we take pride in him, we take pride in his spirit, and I presume you take much more than what we do. So our deepest sympathies are with you for what the past has been, but we want to inspire you through our bleeding hearts, that you must also join the bandwagon and inspire more and more as you can, with your collective wisdom of you and your brother, because he shared everything with you more than he shared with the world directly. So that will be from my side. Varun, I really have to go back to this Oh, sure. marriage I Thank was you in so with much, this Kamal. Safa. Sure, sure. Priyanka ji, Thank you so namaste. much. Have a nice day. God bless you. Rohit, you just put the right thing across, and that will be my endeavor. Thank you so much for Thank you so letting. much. All right. So gracious of you. Thank you very much. Okay. And God bless you all. thank you so much for the people. Please don't take more than 30 seconds, please. And this is not an interview. This is not any kind of other thing. Just gratitude for Priyanka Di for joining this, and for Sushant. So Kapil, let's start with you, and then I really want everyone to just show your love and support. And one thing which anybody here wants to say, उससे पहले मैं इतना जरूर कहूंगा प्रियंका दी, on behalf of everyone, we are here till the very end. मैंने ये tweet में भी लिखा था. I've sent you messages as well. All I want to say is there are gonna be haters, there are gonna be trollers, there are gonna be those bad people. But हम लोग यहाँ पर खड़े हैं. Many Sushants are around you and outside of the stream, outside on the social media, outside even on the streets. हम सब का घर का, हमारी फैमिली का, I can't even tell you, so many of Sushants are always here with us. Imagine. और ये हम सबका हो चुका है ये लाइफ. We really love this man. पता नहीं हमने इसको
I feel bad myself. जब ये था, when was he was in physical existence, I don't know why we did not do what we were supposed to do. And now we've realized we're not going to make this mistake. Sameer Wankhede ko jo humne support diya, wo it was all out and out because of Sushant. Because jo Sushant ke saath hua, hum nahi chahte koi aur Sushant bane. But rest assured, for the rest of the life, you have many Sushants around the world who are always going to be here, rock solid, no matter what. And anybody who takes a dig, we are your wall, we are your defense forever. You don't even have to tell us. We will Thank tell. you so much. And we need to thank Sushant's very benevolent energy and soul that it has the capacity to unite people even when he's not in physical mortal body. So, yeah, thanks to that divine energy. Yeah. And yeah, thank you. Yes. Kapil, please, let's all take 30 seconds and show our love. That's all I can say. Please. नमस्कार प्रियंका जी, सबसे पहले नमस्कार। प्रीति जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। और जैसे कि वरुण जी ने भी कहा कि वो स्पीचलेस हो गए कुछ देर पहले, मैं खुद हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ आपको। सबसे पहले शुक्रिया। मैंने उस दिन भी आपको शुक्रिया किया था जब मैं आपसे दिल्ली में मिला था। मैंने आपको कहा था प्रियंका जी आप यहाँ हैं, आपका शुक्रिया। और आपने बड़ी बात कही थी कि शुक्रिया आप सभी का कि जो इतने एसएसआरियंस लड़ रहे हैं उनका शुक्रिया। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं मैंने एक नोट लिखा है आपके लिए, मैं एक छोटा सा नोट पढ़ दूंगा। प्रियंका जी, सबसे पहले सुशांत के बर्थडे की या फिर यूं कहें सुशांत डे की शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि सुशांत भले ही आज हमारे बीच फिजिकली नहीं है, लेकिन इमोशनली, मेंटली हम सब सुशांत के साथ जुड़े हैं। मुझे याद है कि आपने भी कहा था सुशांत सिंह राजपूत आपसे डिस्कस किया करते थे कि पूरी दुनिया कैसे बटरफ्लाई इफेक्ट से जुड़ी हुई है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक जादू की तरह। ये करिश्मा ही तो है कि हम सब एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन सुशांत ने हम सबको जोड़ दिया है, हम सबको एक किया है। मैं यहाँ हूँ, वरुण जी अमेरिका में है, आप कहीं और हैं, बाकी जितने भी एसएसआरियंस हैं अलग अलग लोकेशंस में हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्से में, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एक हैं। मैं तो कहूंगा कि ये सुशांत का कनेक्शन है जो हमें जोड़े हुआ है। प्रियंका जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आसान नहीं है आपकी फीलिंग्स को बार बार किसी और से शेयर करना या सोशल मीडिया पर कुछ भी कहना या ग्राउंड पर आकर कुछ भी कहना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, वो आप में है। आप जितना भी जब भी बोली हैं उन सब के लिए शुक्रिया। चाहे आप ट्विटर पर बोलें या फिर ग्राउंड पर आकर बोलें, जितने भी एसएसआरियंस हैं उन सब की तरफ से आपका एक बार फिर से शुक्रिया। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे माफी मांगूंगा। माफी इस बात की कि आपके भाई को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। माफी इस बात की कि हमारा सिस्टम गहरी नींद में सोया हुआ है। माफी इस बात की कि आप लोगों से सवाल किया जाता है। ये चीजें हमें बहुत तकलीफ देती है। हम समझ सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचता होगा। बस आपसे यही गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। मैं जानता हूं कि आसान नहीं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। और आखिर में बस इतना कहूंगा कि सुशांत को जस्टिस जब तक नहीं मिल जाता, हम सब आपके साथ यूं ही आवाज उठाते रहेंगे। बस इतना ही मैं कहूंगा। Thank you so much. Shukriya. Thank you so much. It is so heartening. Girija ji, please go ahead. And guys, please 30 seconds everyone. And कपिल भाई मैं आपको लगाऊंगा क्योंकि एक दो लोग और हैं जिनको मैं लेना चाहूंगा। Sure. Thank you. Please go ahead, Girija ji. We have heard a lot about you, and to see you here in person is really very touching. We all have heard it, tough people, tough times never last. Tough people do. So Sushant has made us tough. Sushant has made us assertive. Sushant has made us aware of our rights. Sushant has made us aware of our responsibilities and has made us seek justice like we have never done. And he has brought the whole universe together. What more can a person do in a span of just 34 years? I can't understand that. So you must be very proud, and I'm very sure that all of us feel proud of him, and we are all with you, and I'm sure that we will get justice and will not let it go. We will get justice. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you, Girija. Thank you so much. So Thank good you. to see. Bharat and everyone, please 30 seconds. Please 30 seconds. Hello, Priyanka Di. First of all, to begin with, a very happy Sushant Day to you. And I mean, I'm lost of words right now. I'm
it is one of the best return gifts that we could expect from Sushant in form of you coming here today and gracing your presence. So thank you for that. I just want to promise you this, that by coming here today, you have simply quadrupled our strength. So we are going to try and ensure that we stand by your side, even more stronger till we reach the conclusive end to this case, and we want justice for Sushant. Thank you so much for coming. Thank you. Let's keep together in solidarity, and I'm sure this time we'll get justice. Who knows? He will. He will. All right, Shweta, please go ahead. गुड इवनिंग एवरीवन, प्रणाम दीदी एंड सबसे पहले तो सुशांत डे की शुभकामनाएं आपको एंड सिंस जल्दी जल्दी बोलना है तो आई जस्ट वांट टू से दैट वी आर गोइंग टू स्टैंड बाय द फैमिली एज वी हैव बीन रॉक सॉलिड और ये प्रॉमिस है, ये प्लेज है, ये ओथ है हमारी कि आपकी ढाल, आपका एक सपोर्ट पूरी फैमिली का हम बन के चलेंगे. वी represent the family and we would be representing the family. We are there till the end. सुशांत की जस्टिस के लिए आवाज और गुहार ऐसे हम लगाते रहेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आज आए and I can feel Sushant and you, the expressions, the vibes, I can get those vibes. So it's really very special. Thank you so much. Thank you. It's your love that you all of you say that, but I must thank you all for being there, because it reminds me of my brother, that he has put together his own army. He's divine. Thank you. His warriors for life. Thank you. Thank you, Shweta. And guys, जैसे जैसे आप निकल रहे हैं, please move yourself out as well. Judy, please go ahead. Thank you so much, Varun. First of all, Priyanka ji, it's an honor and a privilege to meet you. I'm actually speechless, don't know what to say, but there's one question which came to my mind. What do I ask Priyanka ji? And for me, talking to you is like talking to Sushant. I'll never meet him in this life. I'm nearly 50. I'm nearly like his mother's age, and so for me, it's like losing an older son, because I have two more boys, younger ones, and this is something which I made for them. It's something which I saw Sushant wearing it in one of his interviews, and one of my son is in mechanical engineer. So on that, I wrote for him. Our birth, these are the quotes which Sushant had written, and I made these for them, saying, our birth and our death, we don't decide that, but how to live life, we can decide that. And their initials are SSD, and I put it along with SSR. And my other one is in theater. So for him, I put a quote of Sushant saying, being a good actor isn't easy. Being a man is even harder. I want to be both before I am done. So this, they carry with them a small piece of Sushant, they carry with them. And I would just want you, because I think you are Sushant, because I had heard somewhere that you are just, your thoughts, your views all aligned. So I just want you to bless them. And I think that Sushant blessed them. Thank you so much for giving this opportunity. And thank you so much. And we will do what we can, and we'll continue to fight, till we get justice for our son. Thank you. Thank you so much. Thank you, Judy. Thank you. You made me emotional. What can I say? Yes, thank you so much. Yeah. All right, Yash, please go ahead. Okay, I'm going to make it a super fast mode. First of all, Preeti ji, you are very level. We love you so much, and I'm super blessed. Priyanka ji, I'm a Tamilan. I just want to say that we Tamilans from around the globe, we love Sushant, and I'm shivering right now. My body is cold. I have no words. I thank the stream. I thank Varun. I thank everyone. I thank Sushant. Basically, this is the biggest gift Sushant will give us. Now onwards is going to be a different, very level of strength, because we feel we're directly speaking to you. I'm not going to waste this 30 seconds. Varun bro, everyone, thank you so much. Preeti ji, yes. Can I speak? माहौल इतना ज्यादा ऐसा हो गया है कि मतलब मुझे लग रहा है मैंने आज तक जितने 1000 डिबेट्स किए नेशनल टेलीविजन पे सब बेकार हुए. चलो दीदी को तमिल में बोल के दिखाओ. अब दीदी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं. जल्दी से Priyanka didi, நாங்க எல்லாரும் தமிழன்ஸ்
உங்களை லவ் பண்றோம், உங்க ஃபேமிலியோட இருக்கோம், நாங்க சுஷாந்தோட இருக்கோம். That means we are Yes, all yes. there with you. நாங்க சுஷாந்தோட இருக்கோம். சுஷாந்த் கூட Yes, தான் இருக்கோம் எப்போதும். ஆமா. And I mean, you have no need to worry. You have millions of Sushant and millions of Sushant sisters also. So you கோடி are கோடி சுஷாந்த் இருக்காங்க உங்க கூட. exactly. Last thing I'll say to Preeti ji and I'll run away. Preeti ji, you are really a lioness. Really Singham. Samir sir duplicate version, female version is you. You are very lovely. Thank you, Varun bro. Varun bro, I love you so much. Priyanka ji, thank you so much. I'm going. Thank you so much. Bhupesh sir, please go ahead. So first of all, I would like to pay my gratitude to Priyanka ji to be here, to bless this. You know that we all are meeting together. That's the biggest thing. As somebody said that we are already talking to like Sushant when we are talking to you, and Priyanka ji, in all my capacity as a forensic expert, whenever you require, with all the millions of people, we are there for you. And don't feel, you know, about the trollers, and they will keep on saying they don't have any other thing to do, and we, the true SSRians, will be together always and always. Thank you, Bhupesh ji, and I might need your help very soon. So yeah, For sure, anytime. Thank you. Thank you so much, Bhupesh ji. All right, Charles, please. Hi, Priyanka. Shalini from Australia. It's 2:30, I think, or it's close to about 3 o'clock. But it's a very, very special day for all of us, and I guess some of us are emotional as well. But I just wanted to congratulate you on Sushant's day. Sushant is not just a sensation. Sushant is not just a revolution. Sushant today, if without any offense to anybody, is a religion for us. And we bring He's listening. I'm sure he is, and he'll be very, very happy that he has done this. I'm please don't mind, but I was never a fan of Sushant because I didn't even know him. I just saw one movie and I did not notice him. And like everybody has apologized, I apologize too for not realizing the soul that he was, the power that he was. And he is. He wasn't. He still is. The closest we can ever get to Sushant is through you. So I feel very privileged and I feel very lucky. And thank you, Varun, for bringing this moment in my life that we can also celebrate. मैं बता रहा हूँ, I've been an RJ. I've done, I don't know, I've done thousands and thousands of things. This is my first time ever. I'm not finding words. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, and I can feel Sushant right now. I don't know if I should be saying this, but I can feel him. But Varun, it's your energy that I could come because I have COVID. So since 2 days I was like bedridden, but because I had committed to you, I'm sitting here. It's your energy. So of course, thanks a lot for getting us together. Thank you. Wish you a speedy recovery, Priyanka. And like everybody has said, Sushant har dil mein basta hai ab. Sushant har ghar mein basta hai ab. You're not alone. Sushant is an extended family, if I can take the liberty to say that. I think he was such a blessed soul. He is such a blessed soul that he still touches our hearts. He sapne mein bhi aaye, you know, after he left for his heavenly abode is when he impacted all of us. और वो आज तक है. Can you imagine that, you know, despite all our busy schedules, despite I've never known Varun, I've never known Preeti ma'am, but he has brought so many people close. He has made families out of us. Only such a divine soul like him can do that. So I would say, even, you know, you're blessed to have him in your family, and I'm sure your family is blessed too. I just want to say congratulations on Sushant's day once again. We will never give up this fight, and we will make sure that justice is served. For us, Sushant is a synonym for justice. He stands by for so many things. I've seen his interviews. I am so impressed with this guy. And I go around telling everybody, I tell each and every person, even the foreigners that I have here, that they should go and see his interviews and listen to him. There's so much to learn from this man. There is so much to, to get inspired from, you know. Okay, I'm talking too much. I'm sorry. I'm just getting important. मुझे एक मिनट के लिए यहाँ पर pause लेना पड़ेगा because I think somebody wants to join here. Somebody, Priyanka, you know,
who is actually standing. This is all surreal right now. Whatever is happening is surreal. Somebody who's standing outside Mont Blanc. Oh, I will have to remove one or two people, guys. I can take you back in, please. Thank you so much. Thank you for offering. Actually, it's Nilotpal ji who's standing outside Mont Blanc, and oh, he just please, pinged please. me. He wants to be here. So, Rudra, can I can I take you later, please? I just want to have some free space. Thank you, thank you, thank you, thank you. Uh, okay, I'm gonna just take him, but yeah, please, Shalini, Just make it, one last thing, and yes, I'll please, go please. away, right? Priyanka, the connection with Sushant extends to you. So dil ka rishta dil tak, we are always there for you. Thank you. We love you. Thank you. All right. Uh, please go ahead, Shashi ji. You're mute, Shashi ji. You're mute. Shashi ji, you're mute. Yeah, yeah. Can you hear me now, Varun? Yes, yes, please. Okay. Yep. Hello, Priyanka ji. Sorry about that. Yeah. So, being a father of a son, is one of the worst fears that I could ever think of. I think it has happened with KK Singh ji. So, I hope he could see whatever he's going through, we are also going through. So, I hope he draws strength from that. And I hope he continues to be a pillar of strength for all of us here, including you and, yeah, maybe Sushant, wherever he is. So yeah, so that's where I was thinking, because most of the time I was thinking of not Sushant also, not of your sisters also, but of KK Singh ji. So that's yeah. Please pay my respects to him whenever you meet him. So, and of course, yeah, be for justice, not just for Sushant but for everybody else whoever has been in his team. So thank you, Priyanka ji, for giving me this opportunity. Thank you, Arun. Thank you, Shashiji. I will convey your thoughts to my dad, definitely. Thank you. All right. Thank you. Please go ahead, Suchitra, quickly, and Yeah. Hello, Priyanka Di. Hello, Preeti ma'am. Hello, Varun sir. This is the very first time I'm talking to Priyanka Di. So, hi, Priyanka Di. I hope Hello. you're well. I'm doing all I hope right. you're Thank doing well. Priyanka Di, I just want to tell कि मैंने अभी 1.5 2 साल में बहुत कुछ ऐसा देखा है that काफी लोग आते हैं, आपको आपको और आपकी फैमिली को ट्रोल करके जाते हैं। तो मैं जस्ट ये बोलना चाहूंगी कि दी, आप बिल्कुल मत डरो, हम सब आपके साथ हैं, चाहे कुछ हो जाए। आपका एक ट्वीट आता है, जैसे कि प्रीति मैम ने कहा कि आपका एक ट्वीट आता है या श्वेता दी का एक ट्वीट आता है, हम सब रीट्वीट करने में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं एंड स्प्रेड करने में बिजी हो जाते हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट उस ट्वीट के दौरान। एंड दी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं, हमारी विशेष आपके साथ हैं एंड आई प्रॉमिस यू दैट कोई रहे ना रहे, आई विल ऑलवेज बी देयर टिल द एंड, क्योंकि सुशांत भैया सिर्फ आपके ब्रदर नहीं हैं, वो हम सबके ब्रदर हैं अब। और मैं अपने भाई को जस्टिस पे दिला के रहूंगी, चाहे कोई Thank you, कुछ भी Suchita. आके बोले। Thank you, Suchita. May God bless you. And let's be in this fight together. Thank you. थैंक यू all थैंक यू right. सो मच Thank एंड थैंक All right. Namaste, Nilotpal. Welcome. Can you hear us? Hello. Yeah, hi Varun. Hello. हाँ जी, प्रियंका दी भी यहाँ है और Yeah, hi प्रीति जी Varun. भी। Hello. Hi. Can you hear us? Oh, God. Thank you, Nilotpalji. Thank you so much. तो स्वीट, बहुत सारे लोगों के कैंडल्स वहाँ पे लगे हैं। दोपहर से, around 3 o'clock, I think, or 2 o'clock. गॉड। People started reaching Mont Blanc. हमने बहुत सारे लोगों को देखा,
लोग टेबल्स लेके आए उठा के अपने घरों से, केक्स, कैंडल्स, flowers, bouquets, ये play cards. It is all full of these right now. Just imagine, Varun ji, amount of love, amount of respect, emotions for him. I know. Seriously यार, मतलब 2 साल बाद भी लोग सेम इमोशंस के साथ दिख रहे हैं मुझे. और ये कभी खत्म नहीं होने वाला. So दिस sweet. दिस इज अ नेवर एंडिंग थिंग. ये बिलीव भी नहीं होता कि ये हमने पहले क्यों नहीं किया. बहुत रिग्रेट है ये लाइफ में हमारी. ऐसी चीज का भी कभी रिग्रेट होगा लाइफ में, सोचा नहीं था. But this is our biggest regret right now. Why we are to be blamed for all this. Thank you. इस टाइम पे भी मैं देख रहा Thank हूँ. you, Nilotpal ji, for showing us. मतलब no words. Thank you so much. Beautiful. Looks like it dropped off. So guys, मैं ज़्यादा देर नहीं रखना चाहता. Obviously, she is not well. आपने सुना COVID and all. So please make it quick, Shri. Please go ahead. Yeah, hello Varun, hello Priyanka, Di, Preeti ji, everyone. Make Um, it quick, Shri. I, Go ahead. I'm actually speechless, but I'll just try to express my thoughts around this. First of all, happy Sushant Day. Sushant for me is, and for all of us, he's a pure soul, so special and so pure that he enlightened all of us, sort of giant awakening of seeking justice for something that killed humanity. So, so for me, justice is conscience, right? It's not a personal conscience, but the conscience for the whole of humanity. So True. the path of this movement is seeking truth over a lie, seeking justice over injustice, seeking righteousness over the rewards of evildoers, right? So it is staying true to ourselves, our beliefs, and fighting strong. So as the saying goes, law and order exist for the Amit? purpose of, sorry? Sorry, go ahead. I don't know. There was somebody. Yeah, so I was just saying that, I remember one a saying which says that, law and order exist for the purpose of establishing justice. And when they fail in this purpose, they become the dangerously structured dams that block the flow of social progress. So, right True. now, when we are in this movement, we are contributing for the societal refinement. Shushant has done something beyond our imaginations, something True. magical, some kind of miracle that millions of people across the globe are raising their strong voices against the brutality that ended such a pure, honest, intelligent, divine, and of course, a very, very beautiful young life, our very own Sushant. So but we trust our judicial system and have complete faith that justice will prevail for this innocent soul, Sushant Singh Rajput, and every life that has been cut short at the hands of the evils. So Sushant connected people across the globe with the common intent. So True. many beautiful souls met and became a family for all of us. So what is it? Aren't we becoming the better versions of our own self in this process of fighting for the truth, for justice? Aren't we contributing for the societal refinement by participating in this movement? True. Absolutely a big yes. And that's the power of Shushant's pure divine soul that has made us a beautiful, better version of our own selves. So as an individual, I was always upfront, raising my voice against the injustices in my own capacities. But this has given me more exposure, more opportunities to go and raise my voice and make my voice heard to a large extent. So let's continue our fight for Sushant and for every soul that were subjected to inhuman brutality. And let's contribute our bit to make this world a better place. Let our ways of expressions be different within the respectable gamut, but our intentions remain the same: justice for Sushant Singh Rajput and other souls in the most righteous manner. We love you, Dee. We feel your pain. And I mean, as an individual, I have seen the loss of life as a young kid. I have lost my father, so
I completely relate to the pain, the loss of life, that, I can completely relate to your immense pain. And we promise to stand tall and strong with you throughout this journey till we justice is delivered and way beyond that. Happy birthday, dear Sushant. Lots of love. Thank you, Deep. Thank you, everyone. Thank you, Shri. You have put it so beautifully, so beautifully. Thank you. Thank you so It much. cannot have been more joyous to hear that my little brother has awakened souls all around. And once again, Absolutely. thank you. Thank you so much. Okay. Guys, Mary, please request a humble Yeah, request. I know. short में मुझे सिर्फ दीदी 30 seconds, guys. Please, 30 seconds. Don't exactly. make it long. मुझे आज अपने तरफ से कुछ One नहीं, second, जितने भी Rudra. अनसार One वॉरियर second, जो Rudra. आपसे पॉइंट One second, Rudra. 1 second, please. Let's go sequence. Akash, please go ahead. हेलो एवरीवन, हाय प्रियंका जी। एंड लाइक सभी ने सब कुछ बोल दिया, मेरे पास बोलने के लिए कुछ वर्ड नहीं है, बट यस मैं एक बात बोलूँगा कि जो आई मीन मैं उस लोकेशन से बिलोंग करता हूँ, आई मीन जहाँ पे MS धोनी मूवी की शूटिंग हुई थी। सो आई मीन जब भी मैं क्रॉस करता हूँ देन आई मीन सुशांत की काफ़ी मेमोरीज आई मीन याद आती है, लाइक द स्कूल वे JVM Shamli जहाँ पे शूटिंग हुई थी, then the overbridge, all of that. I mean, I used to belong to, I mean, daily I used to go to that particular location because मेरा house वहीं पे. So I mean, actually, I'm very emotionally attached with that. But ma'am, one thing just I want to say that I totally trust on CBI, but I don't trust on any politician. So ma'am, this is just a message I want to convey that I don't trust any politician. All are same. So, ma'am, please look at this. Thank you. Sure. Let's I move. want to be mindful of our health, please, guys. So, Patty, please go ahead. And I'm so sorry. Namaste, and very sorry, and hello, Priyanka ji. And I'll only have one line to sing for you. That's my gratitude and my thank you of being here. I hardly come, so I'll just sing one line and I'll leave. Please. मृत्युञ्जयाय नमः ॐ त्र्यम्बकाय नमः ॐ लिङ्गेश्वराय नमः ॐ जगदीश्वराय नमः ॐ. Happy birthday and thank you so much for the opportunity. Very humble. Thank you so much. Thank you. You have such a beautiful voice. Thank you, Padmaji. Thank you so much. Thank you so much. Please go ahead. And please, guys, 30 seconds. हेलो प्रियंका दी, हेलो प्रीति मैम। सबसे पहली चीज़ कि आज हमारे सुशांत भाई का जन्मदिन है और दिल से ये कहूँगा कि वो इंसान अच्छे थे, लेकिन उनकी अच्छाई सिर्फ हमें नज़र आई, लेकिन उनके साथ काम करने वालों को नज़र नहीं आई। आज आप देखिए, सुबह से लेकर शाम हो गया, किसी के ट्वीट्स नहीं आए जो उनके साथ काम करते थे कलीग्स। सिर्फ किसके ट्वीट्स आ रहे हैं? उनके फैमिली मेंबर्स के, हमारे और उनके चाहने वालों के, सिर्फ उन्हीं के आ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि दोस्त क्या होता है, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, सच्चा दोस्त के काम आता है। लेकिन ऐसे दोस्त किस काम के जो पीठ में छुरा भोंकने वाला काम करे। उनको सिर्फ इतना समझ लीजिए आप लोग कि जो होता है ना ATM कार्ड, जब तक चल रहा है, एक्सपायर हो गया तो किसी काम का नहीं, रद्दी में फेंक दो, उस तरह से इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल सही। थैंक यू आयुष। सच बताऊं सर, एक लास्ट बोलते हैं प्लीज। 14 जून 2020 को जब ये सुनने में आया कि सुशांत अब नहीं रहे, तो उससे पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स सब अपने स्टेटस पे डाल रहे थे, तो मैंने कहा भाई क्या मजाक कर रही है, हाँ ये कोई तरीका है ऐसे? मैंने कहा यार न्यूज़ खोल के देख ले। मैंने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा एक बार खोल के देख ले, तुझे यकीन हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जो देखा मैंने कह नहीं सकता, खासकर अंकल जी का जो चेहरा था वो उतरा था। थैंक यू। Okay,
Thank you so much. Thank you, Ayush. Yeah, Take right. care. Sonal, guys, iske baad I really don't want to. I would rather give her few minutes. So iske baad I think I'm not going to take any more. Please go ahead, Sonal. I can see Mamta ji. Yes, Welcome, Mamta Mamta Khale is ji. also here. Namaste, Namta ji. Good to see you. Thank you so much, Priyanka ji, and namaste aapko bhi, and really happy to see you. Never got a chance to connect with you, but face to face, physically, but been always connected with you all. And let me assure you today in person to you and to everyone that we are there with you all. We are part of the family. You are part of us, and. Thank you so much, Mamta ji. I have followed a couple of your videos and I can see the honesty come across. So, I have this connect there. So, thank you so much. Thank you. No, you don't have to thank us at all. We are there, and we will win the fight. And this fight is not only of one family. मैं हमेशा प्रियंका जी ये बोलती रही हूँ शुरू से, जब से हमने सुशांत को एक्चुअली इस दुनिया से खोया है, वरना सुशांत हम सबके बीच में है. एंड मैं इस प्लेटफॉर्म से सुशांत को फिर से आई कॉल हिम चैंपियन एंड अ रियल सुपर हीरो ऑफ दिस कंट्री. एंड बाकी सारे एज फार एज आई एम कंसर्न जितने भी आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, दे आर जस्ट एंटरटेनर्स. एंड सुशांत के लिए एक बार फिर से आई एम विशिंग हिम a very happy birthday, and I keep saying, and this is what I've been saying since morning, that God bless you wherever you are, Sushant. And closure तो सुशांत को मिलेगा, 100% मिलेगा. And we all know कि क्या हुआ है, पर hats off to you, to uncle, to everyone. जिस तरीके से आप लोगों ने उस डिग्निटी को रखा है, इतने बड़े दुख को झेला है प्रियंका जी, इतना कुछ आप लोगों के साथ हुआ है. मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहती हूँ दिल से, सच में. कई बार मैं बहुत लाइव्स में जाती हूँ और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, एंड आई एम गेटिंग इमोशनल सीइंग यू, बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब हम लोगों को इतना बुरा लगता है, जिन्होंने सुशांत को कभी देखा नहीं, हमने कभी हम सुशांत से मिले नहीं, तो उस परिवार के बारे में सोचो जिन्होंने अपना एक हीरा खोया है. और जब भी किसी की हिम्मत टूटती है, या जब भी किसी को ये लगता है कि नहीं अब मतलब क्या हो रहा है, नहीं न्याय होगा, तो आई ऑलवेज टेल एवरीवन whoever meets me or talks to me that please look up to the family, look up to these sisters, and especially look up to the uncle and realize कि वो strength आपको वहीं से लेनी है. और मतलब कई बार ऐसा लगता है कि लगता क्या है, ये सच है कि ही वॉज अ डिवाइन सोल. और जिस तरीके के अपब्रिंगिंग एंड वैल्यूज आप लोगों ने सुशांत को दी थी ना, वो काबिले तारीफ ही नहीं है, उसके लिए अगेन सल्यूट है. क्योंकि सुशांत सिर्फ मतलब एक ऐसा बच्चा जो इतने बड़े बड़े जिसके सपने थे, मध्यम परिवार से जो बच्चा आया, और उसने केवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं प्रियंका जी, आप लोगों को नहीं, इस देश को बहुत गौरवान्वित किया. और आज सुशांत एक मुहिम बन गया है, क्योंकि सुशांत वाज अ डिवाइन एंड प्योर सोल. तो immense amount of love and respect for you all, and virtual hug for you. Thank you ममता जी. एंड ये लगता है कि अभी भी इंसानियत मरी नहीं है, और सुशांत ने ये सब हम सबको फिर से जोड़ा है. तो ये तो कह सकते हैं नियति का ही खेल है, और सुशांत उस चीज के लिए यूज हुए या उस चीज के काम आए, तो एक गर्व तो है, लेकिन हाँ उसकी कमी बहुत खलती है. बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो आसपास ही है. आज भी मैंने उनके एक दो वीडियोस somebody had sent, so I watched it and I could hear him right inside my ears. वो कुछ करते हैं, वो बोलते हैं. So he's so lively that he feels to be around. But the revolution that he has awakened, it gives a lot of joy to me, and he has brought me in connection with so many people who are truth bound and who are truth seeking, and for that I really am thankful to him. Thank you all for being there. Let's take it to another level. Let's make it happen this time. Let's make justice happen this time. Absolutely 100%. It will definitely. All right, मैं फटाफट इसको wrap up करना चाहूँगा. Sonal, please go ahead, and guys, please 30 seconds, please. Hello, Priyanka Di. I'm actually choking. I'm not able to speak, but happy Sushant Day to us.
And may our voices soar through the universe. We are standing right beside you every step of the way. And Sushant is our brother. And yes, I'm short of words. Sorry, Sushant, he's love personified. So please stay strong. We are right there. And lots of love to you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you Varun. so much. Thank you. Thank you, Varun. Rudra, please go ahead. या मैं बस एक पॉइंट जो है जो बहुत से एसएसआर वॉरियर उनके बिहाफ में दीदी को कहना चाहूंगा कि मैं बहुत से एसएसआर वॉरियर ऐसे हैं उनके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है कि माता पिता के बाद अगर कोई स्थान रखते हैं तो वो सुशांत सिंह राजपूत सर हैं। ठीक है, वो हमारे सर जैसे हमारे गुरु जैसे हैं। ठीक है, और बहुत गर्व से कहता हूँ कि मेरे माता पिता भी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। तो इट्स लाइक आप जस्टिस तो मिलना होके रहेगा और वहां से एक नई शुरुआत होगी। ये प्रॉमिस है हम सारे एसएसआर वॉरियर का आपको। इट्स नॉट ओनली जस्ट द जस्टिस, उसके बाद लाइफ लॉन्ग हमेशा मरते दम तक हम आपके साथ एक एक्सटेंडेड फैमिली बन के खड़े हैं अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। तो प्लीज कभी भी आप अकेला मत सोचना, आपके साथ लाखों की पूरी फैमिली आपकी है ग्लोबली। ठीक है, और सारे माता पिता, हम लोग भी, यंगस्टर, सारे लोग हैं। ठीक है, तो हमारे लिए माता पिता के बाद अगर कोई गुरु का स्थान रखता है तो वो सुशांत सर हैं। तो बस यही बात करनी थी। थैंक यू। Thank you, Rudra. I've met you and I know your energy, and I only want to reiterate once again कि हाँ, let's make honesty fashionable again. Let's make humanity fashionable again. It's high time, and maybe after my brother, I think it's time. One more last thing कि जैसे मेरे नाना जी कहते थे कि मैं तो उस जमाने से ताल्लुकात रखता हूँ जब सुभाष चंद्र बोस जी थे। गर्व से कह सकता हूँ कि मैं उस जमाने से हूँ जहाँ पे समीर वानखेड़े जी और सुशांत सिंह राजपूत सर जी जैसे लोग हैं। बस। Very good. Thank you. Absolutely. All right. Before I take Preeti, I think this Preeti on the left. Preeti ji, आप बोलें please. I think you have to leave. बिकॉज आई एम इन ऑफिस स्टिल और मुझे घर भी जाना है। 10 बजे से कर्फ्यू है, बट इतना इम्पोर्टेंट ओकेजन हम मिस नहीं कर सकते थे। प्रियंका दी, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ममता काली जी को मैं सरकार कहती हूँ और बहुत उनका बड़ी बहन की तरह है। सुशांत सिंह राजपूत ने क्या हमारी जिंदगी में असर डाला है, मैं आपको ये बताती हूँ। मैं और ममता दी अलग अलग डिबेट्स करते हैं, बहुत सालों से करते हैं, दोनों एक्टिविस्ट रहे हैं, लेकिन मैं दीदी से मैं कभी नहीं मिली। सुशांत के केस में हम जब डिबेट करने लगे उस समय कोविड का टाइम था। हम जंतर मंतर पे पहली बार मिले थे, दी याद है आपको? जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के टाइम में उस समय अर्नब को जेल हुई थी, अर्नब जी को। हम पहली बार, मैं, ये रोचिका, अनुजा कपूर, हम सब एक साथ मिले। और वो टाइम है और आज 1.5 साल का टाइम है कि दिल्ली में जब से मैं पहली बार 15 सालों से रह रही हूँ, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे परिवार से बाहर, मेरे माँ बाप, भाई बहन, ब्लड रिलेशन के बाहर पहली बार मुझे एक्टिविज्म इंडस्ट्री में या अपनी, हम मीडिया में जहां बैठते हैं, पहली बार कोई दोस्त, बड़ी बहन के तौर पे सेम माइंडसेट वो ममता दी मिली। और वो मुझे छोटी कहती है, बहुत प्यार है दी से मुझे। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि सुशांत ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में या लोगों पे नहीं, हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी में, मतलब मैं दिल्ली में हूँ, दी उत्तराखंड से आती है, मैं बनारस से आती हूँ, आप कहीं और से हैं, वरुण अमेरिका में बैठे, मुझे मेरे ऑफिस में लोगों के अलग अलग हिस्सों से विश्व के फोन आते हैं लैंडलाइन पे, और पहला शब्द सबका यही होता है कि आपको हम बहुत पसंद करते हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप बहुत लड़ी हैं। हम अमेरिका से बोल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे हैं, हम कनाडा से बोल रहे हैं, हम ओमान से बोल रहे हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे अपनी जिंदगी में हम सब की, मुझे, मेरे, ममता जी की, हम सबकी जिंदगी में सुशांत ने बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है। आप शायद, मतलब चाहे हमारे डिबेट्स को लेके, चाहे हमारे करियर को लेके, चाहे हमारे इमोशंस को लेके, एक छोटा सा एनजीओ, एक छोटी सी गली में, एक छोटे से ऑफिस में चलाते हुए मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि कोई मुझे अमेरिका से फोन करेगा, कोई मुझे कनाडा से फोन करेगा। और वरुण और हम, मतलब ही इज लाइक फैमिली। पर वरुण के शो में भी हम सुशांत सिंह राजपूत को ही डिस्कस करने के लिए पहली बार मिले थे। और आज भी इतना टाइम हो गया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बनारस जाती हूँ या मैं यूपी के किसी गांव में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे लोग इस चीज से रिकॉग्नाइज नहीं करते कि मैं देश के मुद्दों पे रोज टीवी पे झगड़ा करती हूँ। मुझे लोग इस बात पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत लड़ी है। तो हमारा नाम जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ा, उसमें अंदर से खुशी मुझे इस बात की है कि अंदर हम लोग, मैं, ममता जी, हम कभी ये बात भी करते हैं कि हम लोगों, सुशांत ने जाते जाते भी हम लोगों को इंडिविजुअली, पर्सनल लेवल पे बहुत कुछ दिया है। That is true. बहुत कुछ दिया है।
मतलब मैं आपको बताऊं, नेम, फेम, करियर, प्यार, मोहब्बत, इमोशन, सब कुछ वर्ल्ड वाइड लोगों से जोड़ा है। नहीं तो आप सोचिए कि आप कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ममता दी कहाँ है, कोई कोई कहीं से, कोई कहीं से जुड़ रहा है। गांव गांव, कस्बे कस्बे से लोग फोन करते हैं। क्या मैं शहर, क्या गांव, क्या मैं विदेश। इस बात पे एक वाक्य बताती हूँ कि जी सुशांत जब फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो क्योंकि वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल काइंड के थे, तो बहुत कम लोग होते थे जिससे वो काफी देर तक बात कर सके। तो नेचुरली जो भी उनका काम है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट एसोसिएशन वाज देयर। बट वो मिस करते थे कि कोई भी चीज, किसी भी टॉपिक पे बहुत देर तक चर्चा करना या कनेक्ट कर पाना दिल से, वो मिस करते थे। तो कभी कभार जब मेरे से बात होती थी, तो आई वुड लाइक टेल हिम कि आई जस्ट मेट अनदर पर्सन। अच्छा ममता जी, आई ऑफन गो टू उत्तराखंड, Oh, and lovely, every 2 lovely. months I go to mountains in Uttarakhand, so that's Oh, also very there. nice. And Lovely. Banaras is another place that I always often visit. Preeti ji, अगर आपको पता है वहाँ पे दी, JK अब now it is your house, you have to come, you have to visit, please let us know. We as a Banarsi will be very happy to see you there. So the connection I'm talking to, Sushant used to say ki I would say ki I met this scientist, or let's say this person who's working in AI, and the levels that we talked, और कितनी सारी बातें बाहर आई, और पता है भाई ये होता है वो होता है, and he's like, oh no, मैंने भी कुछ ऐसे ही conclude किया. Who is this person who was talking about it? Oh, I really How want sweet. to meet these people. Where do you get them? So next time when I'm in Delhi, let's meet all of us Meet together. up. Miss those kind of intellectual, Absolutely. mind invigorating meetings and thoughts. अब वो मैं उनको ऐसे लोगों से मिलाती रहती थी जब वो इधर आते थे। तो एक हमेशा मेरे घर में there's always used to be meetings, spiritual discussions and stuff like that. अब मैं उनको थैंक्स बोलूंगी कि तुम पता नहीं कहाँ बैठे बैठे मुझे किन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। So thank you that I met you and Preeti ji. Actually, we feel कि he is a divine soul जो सबको कनेक्ट कर रहे हैं चारों ओर से। और मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के भी नाम बता सकती हूँ, कुछ ऐसे लोगों को भी कह सकती हूँ। वरुण के शो से मैं कनेक्ट हुई थी, और ओमान में है प्रतिमा जी। वो इतनी इमोशनल है सुशांत के लिए कि उनकी बीच बीच में सीरियसली तबीयत खराब हो जाती है, और मेरी उनसे जब भी बात होती है तो वो सुशांत को लेके, अगर हमारी 1 घंटे बात हुई है तो वो उसमें 40 मिनट सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करती हैं। और उनकी एक्चुअल सीरियस में तबीयत खराब होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो मुझे उनको बीच-बीच में, मैं जब उनसे बात करती हूँ तो कहती नहीं मैं थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन मुझे उसकी टेंशन होती है बहुत सोच के। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप तो परिवार से लोग हैं, जैसे ममता दी ने कहा ना, सही बात है, हम तो कभी मिले नहीं थे। और ही वाज सच अ बिग स्टार, हम कभी घर के बाहर खड़े होते तो पता नहीं हमें कभी ऑटोग्राफ भी मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि सुशांत के लिए कभी हम, मतलब उनके जाने के बाद हम कनेक्ट होंगे। लेकिन वी आर हैप्पी कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पे हम कनेक्टेड हैं। फाइट विल ऑलवेज गो ऑन टिल द टाइम हम जस्टिस हमें मिलता है। दी आप दिल्ली में है, कहीं भी है, आपको जब भी लगे कि आपको ऐसे साइलेंस की जरूरत है, जैसे मैंने आपको कहा, जस्ट अ ट्वीट, 48 आवर्स, सब इकट्ठा हो जाएंगे, बैंग ऑन गैंग की तरह। बिल्कुल। Thank you so much. That, Let's do it. yeah, I'll just add on to this something. What Preeti has said, Priyanka ji, is absolutely correct. And I echo each and every word of Preeti completely. And can't thank actually Sushant enough for getting all of us together on a same platform. I never wanted to be on same platform after his demise. Never thought of that. But let me tell you, I remember I am, again, a person I don't jump into any issue or don't take up any issue. I have to have that belief or connect with that issue, and so is the case with Preeti also. So the day this incident happened, I mean it was a Sunday holiday, and we all were having lunch, and I heard this news and I said it is a fake news. This cannot happen, because I had watched his movies, and last movie Kedarnath, because I come from Uttarakhand. And the last scene, I literally cried. I said, no, how can they do this? The hero has done so much, and then end mein he is no more. I said, no, this, I don't like this. And Baba Kedar ke mandir mein to aisa hota nahi hai. I still remember that. But, I till date, a lot of people ask me this question, that, how did you decide to take up this fight? I said, no, I didn't decide.
the moment I heard this, I started Googling about Sushant and started reading about him. And what you have just spoken is so correct, that he could not actually, he wasn't able to connect with people in entertainment industry for the simple reason because the people there are shallow. I have no problems in saying this. They have ऊपर सब खाली है. So obviously the kind of a person he was, a very intellectual, intelligent boy. He would, do a lot of brainstorming, and fine, he was an actor is one thing. But then, yeah, he had that intellectual side of him. So obviously he had nobody to talk to or to share with, and probably that was the reason the entertainment industry could not digest his persona. His that larger than life image or persona, they could not digest. But and even today, the feedback I get, like the people are still wondering as to ये कैसे हो गया, मतलब सुशांत के लिए इतना बड़ा जन आंदोलन कैसे बन गया. बट वो नहीं समझते हैं और नहीं समझ पाएंगे. बट अगेन yes, we love you all and we are there. I mean, बाकी सब ठीक है जो भी है हमारा, पर सुशांत की जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई है प्रियंका जी, एंड वो हमेशा रहेगी. और यू ऑल आर फैमिली टू अस एंड ऑफ कोर्स ये हम सब ने बहुत चीजें करी, एंड शी करेक्टली सेड दैट we are together only because of him. So love and respect for him. Absolutely. Thank you. All right. Varun, I have to leave because Sure, 10 Preeti ji. बजे में confused. मैं भी तो I have to फटाफट leave, wrap फिर up आपसे करूंगा. connect होते हैं. सबको thank you once again. Happy birthday to Bye, Sushant. Preeti. Happy birthday. Bye, Thank you. Preeti. See you, Bye. Baba. Lots Thank of you. love, Preeti. Bye. All right. Second Preeti, please go ahead. Guys, this is the last, like I said, 30 seconds अभी कम लेना, please यार. She's not well. Sure, You should be very, Varun. very Hi, respectful. प्रियंका दी. मैं Hello. एक ही कुछ ही चीज बोलना चाहती हूँ, फटाफट कंप्लीट करूंगी. मैंने एक बार मैं सुशांत को मानव के टाइम से फॉलो करती हूँ. आई रियली लाइक हिज आईज, स्पेशली. बहुत कम लोग होते हैं जिनकी आंखें बोलती हैं. ही इज़ वन ऑफ देम. मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था. मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि मेरी बहन प्रियंका जो है वो मेरा फीमेल वर्जन है. मुझे उस टाइम पे, मैं आपको नहीं जानती थी, तो डेफिनेटली मुझे नहीं पता था व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. बट इन 2 सालों में जो आपको जाना है, आई कैन नाउ अंडरस्टैंड कि वो क्यों ऐसा कहते थे. सो यस, आई ऑलवेज से हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड Thank you. Happy Sushant's Day to you also. यस, एंड एक बात जरूर करूंगी, अगेन फिनिशिंग ऑफ. सुशांत, यू आर सो ब्यूटीफुल. कभी मत कहना कि तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं. You have so many friends. We are ready to listen. Sorry. Thank you, Preeti. You're welcome. Thank you. Thanks, Varun. Thank you. Pikachu, please go ahead. हेलो प्रियंका दी. आई थिंक रियली ग्रेटफुल आज आपसे मिलने का, आई मीन बातचीत करने का अवसर मिला थ्रू वरुण स्टैन. आई डोंट नो व्हाई आई एम सॉर्ट ऑफ जोकिंग ऑल ऑफ अ सडन, बट हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब तक सेक्शन 302 नहीं लगता हम कहीं नहीं जाने वाले. विल मेक श्योर कि सेक्शन 302 लगे. बाकी लीगल एस्पेक्ट्स नहीं पता, बट इस केस में जब तक वी डोंट रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन वी विल नॉट स्टॉप नो मैटर व्हाट. इतना तो हम करके ही रहेंगे. एंड एक चीज़ और, आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज ईच एंड एवरी एसएसआरियन जो एक कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सुशांत के जो ड्रीम्स थे, राइट, दे आर मेकिंग श्योर कि वो किसी भी तरह से पूरा करे. सो दैट इज आई थिंक वन ग्रेट स्टेप बाय ऑल द एसएसआरियंस. एंड हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जो उसके ड्रीम्स रह गए पूरा मतलब करने की पूरी तरह से वो रहे हमारी तरफ से. एंड एक मैं कंक्लूडिंग चीज़ में लास्ट एक चीज़ कहूँगा. द सैड पार्ट इज दैट दीज मॉन्स्टर्स they didn't kill Sushant once, they killed him thrice. I've said this before, but मैं एक बार और कहना चाहूँगा. एक बार by physically killing him. Second, कहते हैं कि जब आदमी के ड्रीम्स को मार देते हो he dies, and that's what they did with him. His dreams went. पर हाँ, हम लोग उसको पूरा करके will make sure कि his dreams are completed जो भी थे. एंड थर्ड थिंग इज बाय मेलाइनिंग हिम. ऐसी चीज़ें बोली गई जो वो बिल्कुल नहीं था. सो दीज वर द 3, मतलब 3 बार उसे मारा. सो दैट्स हाउ ब्रूटल दीज पीपल हैव बीन. सो आई जस्ट लाइक टू कंक्लूड कि जब तक लॉजिकल कंक्लूजन में केस नहीं पहुंचेगा हम तो नहीं रुकने वाले. बहुत सारे जवाब हैं जो हमें चाहिए और वो हम लेकर ही रहेंगे. 302 तो लेकर ही रहेंगे.
Thank you so much, Pikachu. And here I also want to say that so many people have questioned that why the family went for 306 and not 302. See, in 5-10 minutes of the uncovering of that unfortunate incident, Mumbai police had already announced it as a suicide. And we were not very, Mumbai police was not very cooperative, and we didn't file, couldn't file FIR there. So somehow we had to file it with Bihar police, and keeping the legal technicalities in mind, 306 was the only way forward. And you know, जब आप कोई भी चीज देखते हैं, जैसे कोई भी आम इंसान अगर कोई भी inappropriate चीज देखता है, तो वो जितनी चीज देखता है उतनी चीज जाके पुलिस को बताता है कि भाई मैंने ये देखा कि दो लोगों को घूसा मार के जा रहे थे। हो सकता है जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ये पता चलता है कि 10,000 रुपए भी लूट लिए और किसी एक को मार भी दिया, तो वो पुलिस का काम है। FIR मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो हमें जो इंफॉर्मेशन थी हमें पुलिस को देनी थी, जो कि पहले ही मुंबई पुलिस अनाउंस कर चुकी है कि 306 है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, एज पर दैट, वी प्रोसीडेड फाइलिंग इट, saying if this is the thing that you're saying, if 306 is what you're saying, then these are the attendance situations that we are aware of and we wanted to bring to the notice of the investigating agency. That does not stop the police from actually finding out what all happened. And if it means that a murder took place, the police or investigating agency is free to conclude it as per se. So काफी लोग मुझसे या फैमिली से पूछते हैं कि आप मर्डर नहीं समझते हो क्या, आप 302 क्यों नहीं मांगे? उसमें बहुत सारी चीजें रह जाती, देयर इज लीगल टेक्निकलिटीज, जिससे बहुत सारी चीज मिस हो जाती। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, दैट मींस सीबीआई को किसी ने नहीं रोका है। दे आर वेरी मच विद इन देयर राइट एंड देयर कैपेसिटी टू कंक्लूड एनीथिंग. It can be 302, it should be 302, and everything after that. So it's not with us, it's with the investigating agency to conclude that. So जिनको भी थोड़ी भी डाउट है तो वो प्लीज समझे, वो हमारी that was our limitation, but that does not stop the agency from concluding what they can conclude and what they should conclude. Thank you. Perfect. Thank you, Pikachu. All right, VP, please go ahead. And again, guys, 30 seconds, please. 30 seconds. Hello, Priyanka Di. Thank you for, just, I'm so emotional right now. Thank you for coming here and spending your precious time. And, everyone has said, I don't have words to add, but I just want to maybe sing Sushant's 2 lines of his song to assure you that we are in this till we get justice. Okay. We are with you in this fight. Okay. So I'll just sing one of his songs. Please, go ahead. बिन पूछे तेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम क्या सारी उम्र चल देंगे साथ तेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम क्या सारी उम्र लड़ देंगे तेरे लिए. Thank you. And I have to add, he's looking the most handsome in this song. He's looking so lively. I still remember. Yeah, thank you. Thank you, Varun. All right. RNS, please go ahead. Hello, ma'am. Just wanted to say that whatever you are doing makes us extremely proud. And especially I look forward to your sarcastic comments and your retorts, because I'm just seeing how you are able to see humor and a ray of hope. And in the small fight that we are fighting alongside you, we are all your little soldiers.
Thank you so much. Thank you so much for your courage. If Sushant was there today, he would be so proud of you. Thank you. Thank you. SSR Warriors, please go ahead. हेलो ममता दी, सबको हेलो, सबको नमस्ते। आप लोगों को बहुत देर से सुन रही थी मैं, और प्रियंका दी का आज सामने आकर बोलना बहुत सारे लोगों पे के मुंह पे तमाचा है, जो लोग बोल रहे थे कि फैमिली सामने नहीं आती, फैमिली नहीं बोलती। आज आपका आना बहुत ज़रूरी था, और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, शुरू से ही थे। और जो दुख आप झेल रही हैं और झेल चुकी हैं, वो तो बस हम लोग तो दूर से देख रहे हैं। आप तो फैमिली हो, आप तो कितना सही होंगी। एक किसी का खोना बहुत बड़ा बात होता है। मैंने अपनी माँ को खोया है अभी रिसेंट में ही, तो पता है कि किसी के जाने पे कितना दुख होता है, जिससे आप इतना कनेक्टेड। बट हम लोग को लड़ना है, उसके साथ जो हुआ है। आप आगे बढ़िए, हम लोग सब आपके साथ हैं। और शुक्रिया। जैसे आप बोल रही हैं, आपको बोलना ही होगा दीदी। आप हर प्लेटफॉर्म पर आकर आज बोल रही हो। सुशांत एक ऐसी आत्मा था जो इतने लोगों को कनेक्ट कर चुका है। अच्छी आत्माएं अपने साथ लोगों को कनेक्ट करती जाती। सबसे आप कनेक्टेड फील नहीं करोगी, कुछ ही लोगों से आप करोगी। तो सुशांत ऐसा था कि कितने लोगों को अपने साथ जोड़ चुका है। और आप लोगों के सामने बोलने में थोड़ा झिझक भी हो रहा था, बहुत बड़े हैं आप लोग। बट सुशांत ने काफ़ी करेज दिया हम सबको कि हम लोग कुछ बोल पाएँ। बस ये मूवमेंट को तो बिल्कुल रुकने नहीं देना है, जब तक हमें जस्टिस मिल नहीं जाता, पता नहीं चल जाता कि क्या हुआ था। बिल्कुल। ये जो थ्योरी फैला रहे हैं ना कि मतलब डिप्रेशन में था और सुसाइड कर लिया, वो थ्योरी को तो बिल्कुल काट देना है, बिल्कुल ये सब आगे बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल। और आज जो वरुण जी ने जो किया है, आज का जो लाइव जा रहा है, बहुत अच्छा किया आपने वरुण जी। मतलब इतने सारे लोगों को, बहुत हम लोगों को करेज मिलता है इससे। ये भी ये कर रहा है, सिर्फ ये बिल्कुल, बिल्कुल। हर टाइम ये कर सब रहा है। कुछ सुशांत कर रहा है। सीरियसली। बस यही कहना चाहूँगी मैं, आज बहुत सारे लोग हैं, सबको बात करना होगा। तो मैं चाहूंगा, बहुत देर भी हो चुकी है, एंड आई रियली वांट हर यस, टू यस। टेक रेस्ट। प्लीज रईस भाई, आई डोंट नो, रईस भाई आप तो शायद जानते होंगे, केयर टेकर जो है। रईस भाई से तो मैं मिली हूँ, ये भी मुझसे मिल चुके हैं, आई एम श्योर। प्लीज गो अहेड रईस भाई। नमस्कार दीदी, आप मुझे भाई मत कीजिए दीदी, मैं आपको दीदी मानता हूँ सुशांत सर की तरह। और कैसे वरुण हैं, सर कैसे हैं? नमस्कार, आप कैसे हैं दीदी? मैं तो बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, और बस आप लोग का प्यार है दीदी, और सुशांत सर ने इतना प्यार दिया था कि अभी तक उनको भूल नहीं पा रहा हूँ मैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, क्या हम ऐसा महसूस करते हैं कि सुशांत सर हमारे साथी है, ये बिल्कुल सच है दीदी। मैं तो महसूस करता हूँ, एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं सुशांत सर को याद नहीं करता हूँ या मेरी फैमिली याद नहीं करती है। और जब भी मैं फार्म हाउस के आसपास जाता हूँ कभी कुछ काम से, तो वहां फार्म पर हाउस बैठता में हूँ। वो जरूर महसूस होते होंगे, क्योंकि उन्होंने काफी समय बिताया है वहां, और बहुत बहुत बिल्कुल एंजॉय दीदी, करते एक एक दिन, एक एक पल उनका जब उनके साथ में जो वक्त गुजरा है, तो एक एक पल मुझे याद आता है। और वहां से कुछ न कुछ मैं फोटोग्राफ्स लेकर आता हूँ, तो कभी वरुण सर से भी शेयर करता हूँ कभी। और क्या याद आती है तो परेशान होता है दीदी। आपको तो पता है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सुशांत सर ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, और उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया था दीदी। लेकिन मैं इस ऐसे वक्त पे मैं सुशांत सर के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ दीदी, मैं करूंगा। और आपसे मेरा वादा है कि मैं उनके जस्टिस के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा दीदी। उनके लिए मैं जितना हो सकता है मेरी तरफ से बहुत पूरी कोशिश है दीदी। और दीदी आप लोग बस हिम्मत बनाए रखिए दीदी, और बस, और हम सब लोग का सपोर्ट है आपके लिए, आप हम सबका साथ है दीदी। और बस दीदी, आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, ज्यादा वक्त नहीं है। और ऑलराइट, थैंक Thank यू you. रईस भाई, थैंक यू सो बस मच। अपना ख्याल रखिए दीदी, फिर बात करता हूँ दीदी आपसे। जरूर। प्लीज गाइस, लास्ट 3, वेंकट जी प्लीज गो अहेड।
Pranams, Priyanka ji. So nice to be connecting to a family member. Varun, I must thank you from bottom of my heart. This is a real moment, Thank him. Priyanka ji. Thank Indeed. For everything and anything that we do, there is not a day that we don't remember him. Even I listen to a Pravachar and Bhagavad Gita, especially Sita Prajna or Tulyan Industry, the same to censure and praise. He simply lived it all through his life. Yes. All these very, these are traits we may read and forget. But now with knowing Sushant and really coming to know about all that he had done, undergone, connecting to these concepts, it's more enlivening. Like स्थित प्रज्ञा मतलब क्या है सुशांत जी? अगर निंदा और स्तुति से, yes madam, बोलिए, आप बोलिए. नहीं, आप सही बोल रहे हैं. बैलेंस्ड रहना किसी भी सिचुएशन में. एग्जैक्टली, स्थित प्रज्ञा वही है. उसका अगर जीता जागता उदाहरण है और करीब है एकदम. यहाँ नहीं कि हम कोई पिक्चर में देख रहे हैं या कहीं सुनी बात है. दिस इज वेरी लाइवली and many other concepts. There is not a day that we don't remember him. He is very much part of our life. That's so nice talking to you, and so nice to see that you have all gathered yourself up, mustered yourself up. So justice is going to come very soon. And before I forget, Mamta ji, I'm a great follower of yours. It's so nice seeing you live. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, I do follow your channel. So also, Priyanka ji, my humble respects to your father and all your family members. It's such a wonderful opportunity. I will remember this day. Thanks a ton, Varun. Thanks a ton. No words. Just blessings. Just blessings. Thank you very much. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Usha Kiran, please go ahead. Yeah, hi. Thank you, Varun, for giving the opportunity. Hello, Dee. Hello. Please take care of yourself. I'm seeing आप ठीक नहीं हो. Please take care of yourself. हम as an SSRN warrior from the last 1.5 years, भी जितना भी हमसे हो सकता है हमने किया है. And please don't cry. We cannot see you cry. मैं यहाँ as an individual नहीं आई हूँ. Otherwise I'll choke. So it comes out. This is my life. I know. I do understand. I do understand. Here I have not come as an individual. मैं अपनी टीम की तरफ से आई हूँ. Styler couldn't join because he's at Mount Blanc today to give his bit contribution for Sushant. So उसकी तरफ से मैं आई हूँ to say that Sushant, we will get justice. Mahadev is watching, and those people who are attacking the family, उनको भी महादेव जरूर देख लेंगे. The trollers who attacked us, everyone who made us, backtrack, leave the moment. We might have left the moment, but in our hearts, Sushant will always be there. We'll always pray for him. Sandeep will always pray for him. So, Dee, please always remember we are always there with you. Thank you. So, thank you, Dee. Thank you so much. Thank you, Varun. Thank you. Thank you so much. Sonu, please go ahead. That he is a renaissance man for me. मैंने हमेशा लेनार्डो डी विंची और ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा था, but I think I haven't seen many of his movies. But after his death, I found out about him and I read some of his tweets, and I think he was a wonderful soul. He made me a poet, and probably this is only like 3 or 4 poems I've written in my life, and this is dedicated to you, your family, your father, and to him. पर्दे से दिल में कब उतर गए, पर्दे से दिल में कब, क्यों और कैसे उतर गए. शायद कश्ती से केरल की बाढ़ में, या वो कागज गामी के प्लेन से जो उड़ाया था घर की छत से, या शायद अपार्टमेंट के छज्जे पे रखे हुए टेलीस्कोप से तारे निहारते हुए आइंस्टाइन की थियोरी को सरलता से समझाते हुए, या फिर अंगारों पर चलते हुए भी उत्कृष्ट कलाकारी के हुनर को हमसे साझा करते हुए बस कुछ इसी तरह से दिलों में उतर गए. पर क्यों कोई जौहरी तुम्हें परख ना सका. तुम तो खानों में खान, गुणों की खान थे, खुद महादेव द्वारा तराशे गए हीरे थे. शायद
रंज और गंज से भरी आंख, अंधियारी गलियों में भटक कर तुम्हारी चमक से चंदिया गई। तुम्हारी अदा की बारीकी समझ ना सकी और नासमझी कर गई। तुम्हारे सभ्य आचरण से असभ्यता कर गई। अब विचलित इंसानियत न्याय की बाट जोड़ रही है, शाहों के शाह से अनुरोध कर रही है। एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग दिस, बट बूढ़े पिता के आंसू पोंछने के लिए रुमाल भेज दो। काबिलियत का उत्सव मनाने की जल्दी से इजाजत दे दो। काबिलियत का उत्सव मनाने की जल्दी से इजाजत दे दो। थैंक यू। Very good. Thank you. Thank you. Very beautiful. And my condolences to your father too. And जो कुछ उसके लिए मैं बोलूं वो कम है. He was a divine soul. He was a true Renaissance man. He was so well read. He was so Very well read. right word you used, Sonu. He was a Renaissance man. He is a Renaissance man. Thank you. Okay, guys. Thank you. Please, I really, I think I should not be, misusing this. क्योंकि इतनी देर आप बैठे हैं प्रियंका दी. Please, Leena ji, let's make it very, very quick now. She Yes. definitely needs to take rest. Please go ahead. Yes. Namaste to everyone, and Priyanka ji, thank you so much for coming, because it's puts full stop to all the rumors and fake narratives when you clear the things. So thank you so much, and I'll just say few lines. यूं तो जीवन में कुछ भी नहीं है कम, फिर भी क्यों ये आंखें आज है नम, एक जैसा ही है मेरा तुम्हारा गम, कुछ बात तो है उसमें दम, जो सुशांत के लिए आज मिले है हम सब हम. और मैं कहना चाहूंगी कि जैसे प्रशांत महासागर है, वैसे सुशांत महासागर है ये लोगों का, जो सुशांत के लिए जस्टिस चाहता है और देश की भलाई चाहता है, देश में बदलाव चाहता है. तो ये सुशांत महासागर आपके साथ हमेशा रहेगा. अगर न्याय नहीं मिला मतलब मिलेगा ही, लेकिन अगर कुछ गलत, सॉरी आप कुछ कह रही थी. सॉरी आवाज आ रही थी बीच में. प्लीज गो अहेड. हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर कुछ नहीं हुआ तो पूरी सुनामी खड़ी कर देंगे. ये सुशांत महासागर उतनी कैपेसिटी रखता है और जस्टिस जरूर मिलेगा. थैंक यू सो मच. Thank you, Leena ji. You put it across so beautifully. Thank you. All right. See, now I'm gonna. I will want to take leave. Yeah, please. Mind. And all my thanks to you, and all the thanks to everybody who came and joined this. And let's come together. Let's make it happen. And I'm sure Sushant is with us, and he'll help us. One minute. Please give me 1 minute only. Yes, please. Yeah, प्रियंका जी, वरुण भाई, मेरे पास शब्द नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए. प्रियंका जी को देख के बहुत अच्छा लगा. ऐसा लग रहा है सुशांत को ही देख रहे हैं, तो इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता. हेलो वरुण जी, 1 मिनट प्लीज दी. मैं आपको पोयम अपना सुनाना चाहती हूँ. SSR के लिए मैं लिखती हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ और मैंने पहली बार उनके लिए लिखा है. प्लीज. यस. दिल के झरोखों में सुनहरा पल था, दिल के झरोखों में सुनहरा पल था, आसमान से उतरा हुआ काबिले शख्सियत, आसमान से उतरा हुआ काबिले शख्सियत, ज्ञान के कुंज का उपवन था, ज्ञान के कुंज का उपवन था, मैं यूं दिल बेचारा न था, मैं पंचवटी का छाया था, मैं पंचवटी का छाया था, सुंदर पर्ण से निकला कुटीरे महल था, सुंदर पर्ण से निकला कुटीरे महल था, सपनों के कुंज का उद्याचल था, सपनों के कुंज का उद्याचल था, मैं यूं दिल बेचारा न था, मैं जरठ का विरामदायी मोती था, मैं जरठ का विरामदायी मोती था, रवि से छन कर प्रकाशे सवेरा था, रवि से छन कर प्रकाशे सवेरा था, चांद तारों से छलकता हुआ शीतलता था, चांद तारों से छलकता हुआ शीतलता था,
मैं यूं दिल बेचारा ना था। अभी टाइम तो कम है लेकिन मैं बहुत ही अपने अच्छा था, very nice. यस यस Very छोटी छोटी Amazing, भाषा में amazing. उन्हें अलंकृत करती रहती हूँ और बहुत अच्छा था. थैंक यू सो मच yes, एंड एक thank बार you. फिर से वरुण एक प्रियंका दी, सेंटेंस बोलना चाहती थैंक हूँ, यू। खाली एक सेंटेंस प्रियंका से. Yes. That's how हेलो, much they love you. प्लीज क्विकली नमस्कार नमस्कार प्रियंका बेटी. मैं Yes. तो सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन 1.5 साल से मैं सच बोलूं मैं सोई नहीं ठीक से, सो नहीं पा रही हूँ. आज सवेरे भी मैं वरुण के लाइन पे इमोशनल हुई थी, तो अभी भी इमोशनली हूँ मैं. तो आपको हमारे बहुत सारे आशीर्वाद, और आप आगे जाइए, लड़िएगा, प्लीज छोड़िएगा मत, बच्चे को इंसाफ दिलाइए प्लीज. बिल्कुल मेरा यही बिल्कुल. रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपको देखकर इतना खुश हुआ कि बोलो मत, पूछो मत, दिल भर गया. तो प्लीज आप छोड़िएगा मत, मेरे बच्चे को इंसाफ बिल्कुल, दिला ये दीजिए मेरा प्लीज. आश्वासन है कि ये मेरी खुद की एक जंग है, और ये मैं जरूर मुकम्मल हाँ करके जी, रहूंगी. हाँ जी, हम सब आप तक की तरफ ही देख रहे हैं. बस अब से हमें थोड़ा तसल्ली मिल गई, क्योंकि आप लोग आगे आए, इसलिए बहुत तसल्ली मिल गई. थैंक्स बेटा, थैंक्स एंड टेक केयर. योर हेल्थ इज नॉट गुड, प्लीज टेक केयर. Thank Okay, you bye. Thank you, Bye, Priyanka Arun. Di. Thank Varun, you, thank you Samantha Di. very We'll much, talk later. giving Yes. opportunity. Thank Thanks. you so much, Priyanka Di. This was really, really special Sushant Day for all of us. हमें बहुत motivation मिली, बहुत And I सारी चीजें wanted to किया. do so much, but because of COVID, I didn't have much energy. So it was homebound. You're But down with COVID, huh? yeah. Oh my God, then take Get care well. and get well soon. Get well soon and take care of yourself. You've really, really given a lot of time. Yeah, and Thank thank you for you being for a that. unifier, Priyanka. That's all I wanted to say. Thank you for being a voice for us, and thank you for being the unifier. Let's meet And soon, and let's lots yeah. of love. Lots Yes. of love, lots of Yes, respect and a hug. yes. God bless Thank you all. you. Same to you all, and good night. Thank you. Good night. Thank you so much. 2 मिनट रुके प्रियंका दी, वो चली गई. मुझे भी Wow. कुछ बोलना था उनको. Varun, what? बोल दो यार, अभी आप बोलो. अभय, I'm sure she अरे will do यार, what. This तो was मुझे यही बोलना था उनको कि हम उनके साथ हैं. सुशांत के साथ क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, और ये इस मुहिम का केवल यही लक्ष्य नहीं है कि हम एक सुशांत को न्याय दिलाएं. इस मुहिम का ये लक्ष्य है कि हम किसी और को सुशांत बनने ही ना दे आगे. बहुत कुछ बोलना था मुझे, थोड़ा वो चली यार गई. मैं आई नो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी बातें थी. आई नो एवरीबॉडी वांटेड टू जॉइन. मैं एक चीज कहूंगा, सॉरी गाइस, इस वाली स्ट्रीम को मुझे एंड करना पड़ेगा बिकॉज द अदर स्ट्रीम कपिल इज वेटिंग टू किक ऑफ. तो मैं कपिल के लिए आई विल लेट मी जस्ट शेयर द नेक्स्ट. आप लोग प्लीज उस वाले में ज्वाइन करें, और आपने जो भी बात करनी है, जो भी चीजें कहनी है, उस वाली स्ट्रीम में करें. सो गिव मी लाइक 30 सेकेंड. I'm gonna ping the URL यहाँ पर, and give me 1 second. Let me just copy the StreamYard, and I will see you guys there in the other stream.